Hey, सुरेश किधर है? सुरेश, hey सुरेश. हॅलो दोस्तो, माझं नाव वाल्डरमंत. मी इकडे राहतो. तुम्ही कसे आहे? सगळं बरं आहे ना? हा, तरी आता मी काय करणार? गोस्ट स्टोरीज करणार. समजलं भाऊ? आता चेंज बीच बीच में मैं सब लैंग्वेजेस में बात करते हैं. एक्सपेक्टो लैंग्वेजोनस, निक जोनस. ए सुरेश, किधर है? आ गया. थैंक आई ब्लेस यू. पेट खराब है कैसे? एक्सपेक्टो सुरेनिश. ए बाप रे, क्या हो गया इसको? लुकिंग लाइक निको फरमन. हेलो सर, I'm कैसे very गाय? sorry. मुझे बहुत अरे माफ करना प्लीज. क्या बात है एकदम. वो क्या, आई फॉरगॉट. वो क्या बोलते हैं वो लोग जो लोगों को खाते हैं हैरी पॉटर में? अरे पेट खराब, ठीक है, थोड़ा इनो ले लो. Sorry. लेडीज, You know what I mean. लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां. थोड़ा सा एक दो गालियां हमारे साथ. डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग, द वन, दी ओनली सुरेश मैं तो कुछ भी मेनन. नहीं हूँ. मेरे घर के ऊपर तार, मेरे अक्षय कुमार, सुरेश बार बार हुआ हुआ हार. थैंक यू. And it was yet another Saturday that I waited for something दैट to इट इज. happen. थैंक यू And सर. there he was. There he was. Akshay Kumar. मेरे घर के ऊपर तार. It's just Okay. rhyming, you know. Yeah, got it, sir. Thank you so much. So kind of you. Opposite of love is war. Anyway, छोड़ो वो सब छोड़ो. आज हमारे साथ मिक्स हैमस्टर नहीं है. वो क्या बोलते हैं ना, वो पेट्स को जब लेते हैं उनको न्यूटर करते, What? ताकि अच्छा. ज्यादा बच्चा फैलाए नहीं. आप समझ रहे हो? समझ गए, तो समझ गया, सिरिल जी समझ उसके गया. लिए गए हैं. तो सिरिल जी उसके लिए गए. प्लीज फॉरगिव मी. मैं कल पठान देखने जा रहा हूँ. जस्ट आपको बता दिया बस. तो मैं वो थोड़ा टिकट ऐसा का कुछ मतलब किसी और का पैसा लेके जा रहे हैं आप? गिव मी बोल रहे मुझे हैं. क्या जोक मारते हैं हम लोग. पागल हो गए. बक. लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दिस फिल्टर. अरे आज हमारे फिल्टर्स हॉटकीज पे सर, आप देखना चाहेंगे? यस यस. वर्ल्डर मंथ से सीधा हेलो आओ क्या बात. हाय. बिजी थे आप. कैसे हैं ये आंटी आज आप? मैं थोड़ा काजल लग रही हूँ. इफ आई डू से सो मसाज. काजोल. काजू लग रहे हैं आप. Alternate universe. Leave my लेकिन body. Oh, hi Suresh. Good to have hi you hi on. sir. That Hi lady was Omkar. quite interesting, huh? I knew कौन her सा रेडी? since, I mean, when I was a small kid. कैसे बातें कर रहे हो आप? Anyway, just so everybody knows, what is the idea of the stream? अगर कोई अभी आया है, आप लोग Correct. सोच रहे होंगे कि क्या है बकवास. हम लोग सेम चीज सोचते रहते हैं दिन भर. Hmm. तो आप लोग आ जाइए यहाँ पे. क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड यू कैन कम इन हियर एंड टेल अस योर गोस्ट स्टोरीज. नाउ कुछ भी हो सकता है. यू नो आई मीन बिल्कुल. सुरेश? क्या बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल. बिल्कुल Sorry. बिल्कुल. I'm just doing the payment. तो क्या पेमेंट? व्हाट पेमेंट आर यू डूइंग? मैं कल जा रहा हूँ पठान देखने. अरे थैंक यू सर आप सबको बताने के लिए. बट so we'll start with some of the videos people have been sending me on Instagram. Yes. समझ रहे हो? अरे समझ गया. दिव्यांशी जैन, एक मिनट. देखो ये देखो. अरे दिव्यांशी जैन, थैंक यू सो मच भाई लोग. लव यू गाइस. बिग लव. शाबाश. हे कौन बात कर रहे हैं मेरे बारे में? very interesting. थैंक यू. एनीवे, तो लीव माय बॉडी बोलने तो परिणीति आप लोग प्लीज. तो सीन ये है कि कम टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द लिंक ओवर देयर. यू कैन कम इन हियर एंड टेल अस योर गोस्ट स्टोरीज. ठीक है? ज्यादातर उसमें भूत है तो अच्छा रहेगा. अगर भूत नहीं है, दैट्स नॉट रियली अ गोस्ट स्टोरी. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. गोस्ट स्टोरी इज नॉट स्कैरी स्टोरी. इसमें भूत तो रहना चाहिए. करेक्ट सुरेश? बिकॉज वी आर भूत एंथुसियास्ट्स. बिल्कुल बिल्कुल. भूत भूत होना चाहिए. करेक्ट.
बस मेरा इतना एडिशन थैंक था यू फॉर इसमें। एडिंग सो मच। बट शिवेश, हे माय शिवेश मेरा गॉड। भाई लोग, बोनी टाइम। हाय परी आंटी, हाय, हाउ आर यू? क्या बात है, हॉटकीज की वजह से एकदम टक 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 हो रहे हैं। हाय 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 हाय। So stupid. I think Okay. I'm just finding it very amusing to see you enjoying all these hotkeys and the मेरे को way you're. ये सब में बहुत मजा आता है, मैं अच्छा बहुत अच्छा। मतलब अजीब इंसान हूँ। तो शुरू करते हैं सर, क्या आप तैयार है? भाई बहन लोग, सब लोग तैयार? लाइक आई सेड, हिट द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन, कम टेल अस योर घोस्ट स्टोरीज, बोलो सर। And before we move ahead, do not forget to raise a round of applause for the one and only, the man responsible for the stream, the man who's envisioned the stream, the Another drink for my man, friend Suresh. the man without whom this would not be possible at all. Hoezaay, ए! Kowako. ओह, मैंने बंद कर दिया क्या? अरे अचानक से बंद हो गया। अरे ये मेरे घर के ऊपर तार में अक्षय कुमार, आई जंप इन द कार ऑपोजिट ऑफ लव इज वार। चलो शुरू करें, बहुत हो क्या गया। क्या बात है, क्या बहुत। पूरा आधा घंटा इसमें, एक्चुअली 6 मिनट ही निकल गया, बाप रे। क्या करेंगे हम लोग इसमें? हाँ अच्छा, चलो, पॉपकॉर्न भी आ गया। सॉरी दैट्स जस्ट ट्रू। वी आर ब्रिंगिंग इन आकाश एक्का। Thank you, Suresh, for just checking if the stream is working on SMCO. Sally, we're going to have a fight today. I think कुछ गड़बड़ है। Hi, Nigel. किसी बात Are Dixon is saying my sound is distorted, is it? थोड़ा मतलब, अभी कैसे हेल्प करे सुरेश को? अबे ऐसा मत कर प्लीज, ये अभी ठीक क्या है। चल रही थे? बटन बटन दबा। आकाश, आकाश इज कनेक्टिंग टू ऑडियो। आकाश, हम लोग अरे आपके लिए वेट करेंगे आकाश, कोई why, नहीं। what's wrong with my audio? Yeah, I'm very upset. सुरेश, योर ऑडियो इज फाइन यार, यू जस्ट नॉट ट्वीक योर सेटिंग, इसलिए थोड़ा खरखर हो रहा है। बट इट्स फाइन, उतना भी कम ऑन गाइस प्लीज। And that's the end of tonight's stream, everyone. Thank you so much. To Hello, be hello, very hello, honest. hello, hello, hello. अरे रात that guy रात went. रात रात, हालो हालो। अरे that guy went. या निकल गया, उसको करना ही नहीं है। Bringing somebody else on. अरे there's somebody's come with a कार का नंबर। O3 MIH कार कौन से स्टेट का भाई? This is the last caller for the day, Suresh. Is it better now? Well, if you shout like that तो नहीं सर, आप नॉर्मली बात कीजिएगा, सब नहीं, ठीक is हो it जाएगा। better now? Is the या muffled sound gone? आप ऐसी बात करो सर, डोंट इन लोग की बातों में मत आइए सर, आप मेरी सुनो। Aishwarya, is it muffled now? अर्नब, अरे अर्नब, Yes, sir. Tell me. कम ऑन अर्नब। In today's ghost stream, let us call upon that one ghost who has been haunting all of us. Let's talk to that ghost. The nation needs to be scared. People need to be scared. That's why we're having this ghost stream. Hello, Arnab. रुको Good रुको evening. रुको, I hope उनको you can करने hear me दो। clearly. Unmute. Yeah. Hi, Ah, Jose. lovely. Hi, Hi, Jose. buddy. Hi, Suresh. How's it Hi, going? hi, Good evening. Arnab. Good, Keman good, acho? good, good. You are our Good, sir. first Good. and last caller for the day. Oh my God. बहुत Oh my God. short stream. We are aiming for like 15-minute streams now. Let's see if that works better. Okay. Okay. Cool, 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 cool. Actually, Arnab, So, I thought we were doing like a parody scene. okay. You're Arnab only. Yeah. Arey, welcome Arnab. We'll swiftly Yeah, move yeah. on from It's my, yeah, yeah. I'm quite habitual to know that. Anyway, Arnab and Arnab. welcome, buddy. Welcome. You have a ghost story Yeah. for us? Yeah, sort of ghost story Hi. and uh, some horror experience. Okay. So it dates back to 2014. Okay, thank God. Uh, I was going to say horror experience. Don't talk about a marriage over here. No, no, no. I'm not Okay. till until and I'm still unmarried, sir. Okay. So it's a 2014 story. It dates back to Agartala. We all brother cousins have went for a wedding of our brother. So this is the wedding night that we came back after the wedding and have a hotel room where me and my couple of cousins were there. That night, I quite remember we had the Singham 2 premiere on that night, and we saw that movie and slept. Right in the morning when I woke up, so ऐसा हुआ कि मैं जैसे जहाँ बैठा हूँ वहाँ सो रहा था, उसके पीछे जो इंटरकॉम होता है वो बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ है। मतलब वहां पे वो जो इंटरकॉम का पेस है वो पूरा
उल्टा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर इंटरकॉम भी उल्टा पड़ा हुआ है। फिर बीच में एक कांच का सेंटर ग्लास होता है, आपने देखा होगा काफी होटल से सेंटर ग्लास, जिसमें आप एशट्रे वगैरह रखते होंगे। करेक्ट। ठीक है। तो वो उसका नीचे का बेस है, पर वो कांच मेरे को दिख नहीं रहा, मेरा चश्मा भी मेरे को दिख नहीं रहा। मैं देख पा रहा हूँ मेरे चश्मा के साइड में रिफ्लेक्टर्स होते थे थोड़ा दूर से, मतलब नेकेड आई में वो दिख जाता था। मैं देख पा रहा हूँ वो आधा फुट 1 फुट दूर पड़ा हुआ है। जब मैं पैदल चला गया और चश्मा उठा के देखा, मैंने जैसे चश्मा उठा के पहन के देखा पीछे मुड़ के, मैं देखा मैं जिस रास्ते से आया हूँ वो सेंटर ग्लास पूरा टूट के, मतलब एक एक पीस, मतलब अच्छा खासा पीस हो रखा है, मतलब ऐसा तोड़ रखा है किसी ने, बकायदा हैमर से किसी ने तोड़ रखा होगा उसको। और मतलब इन माई वाइल्ड गेस में अगर मैं वो चश्मा पहन के भी चलूँ तो बेस्ट चांसेस है कि इट वुड पियर्स थ्रू माई फुट इजिली, क्वाइट इजिली। और वहां पे ऐसा लग रहा था कि हमारे बेड को छोड़ के आस पड़ोस जैसे रात को किसी ने युद्ध किया है, मतलब इट हैज टू, मतलब किसी ने लड़ाई की है, ऐसे सब चीजें इधर उधर फूटा फूटा पड़ा हुआ है, मतलब आफत आ रखी थी वहां पे। बस हम तीन, पर हम बाकी मेरे दो भाई मतलब घोड़े बैठ के सो रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या हुआ। We were, मतलब माइंडलेस। और ठीक है, somehow हम लोगों ने गैदर किया भाई क्या सीन है क्या है, फिर एक भैया को बुलाया, हमारे ब्रदर, उन्हीं की शादी थी इवन। ही समहाउ मैनेज कि क्या हुआ क्या पूछ, उन लोग काफी पूछने की कोशिश की भाई तुमने कुछ किया आफत, मुझे वो बता दो एटलीस्ट। नहीं हमने कुछ किया नहीं। तो समहाउ उसने फिर रिसेप्शनिस्ट से एक बंदे को बुलाया। ही वॉज शेल शॉक्ड, मतलब एक ऑटोमेटिक बंदे का क्या ही रिप्लाई होगा कि भाई आपने किया, यू हैव टू पे नाउ, यू हैव टू बियर द चार्जेस एक्सपेंसेस। ही वॉज टू कॉन्शियस कि वेदर यू गाइस आर ओके और नॉट। मतलब इन फ्रंट ऑफ अस ही वॉज नॉट एट ऑल एक्यूजिंग कि भाई कुछ हो गया है, भाई कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ ही नहीं। ही वॉज राइटली भाई आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप कोई ठीक, कोई किसी को कुछ हुआ नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग फिर वहां से निकल गए, फ्लाइट में थे तो भैया मेरे को पूछ रहे कि बंदा बार बार हमसे पूछ रहा था कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसको कुछ हुआ तो नहीं, किसको कुछ हुआ तो नहीं। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्या चक्कर है। और उसने हमसे चार्ज भी नहीं लिया बाकायदा, वो जो हमने तोड़ा है उसने कुछ किया भी नहीं उसका। अब राइट बैक हम कैलकाटा आ गए। कैलकाटा में जैसे हमारी शादी होती है तो वी हैव आवर स्पिरिचुअल गुरु और लीडर समथिंग सम काइंड ऑफ हु कम्स एंड विजिट एंड ब्लेस द कपल। तो उन्होंने जैसे ही हमारे सामने आए, वो आते ही हमें बोल रहे हैं आप लोग ठीक हो। हाँ हम तो ठीक है। कुछ हुआ था अगरतला में? हाँ, हम बोलना चाह नहीं रहे क्योंकि हमने किसको बताया नहीं अभी तक कि मेरे, हम तीन भाइयों और भैया के बीच में ही था। हाँ ऐसा तो हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा। सो द हमारे में ऐसा है कि एक रीति रिवाज है कि हम लोग वो कल शादी में जाने से पहले वी हैव दिस हवन टाइप ऑफ, मतलब वी सीक ब्लेसिंग्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, मतलब मेरे फोर फादर्स के ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो यू हैड द देयर ब्लेसिंग्स बिकॉज देयर वाज सम ब्लैक entity or something out there to cause you harm, but all because of your forefathers and their they came as a saviors for you। मतलब कोई चांस ही नहीं उनको पता हो कि हम लोग का ऐसा, हमारे साथ ऐसा हुआ, कोई चांस ही नहीं उन्हें पता हो, पर somehow उन्होंने देख के एकदम से हमसे पूछा कि सब ठीक है। और ये एक स्टोरी है। कट टू पार्ट टू। एक और स्टोरी है कि समहाउ ये मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ हुआ था कि somehow we had a land dispute in our ancient land in our home background। So काफी सालों का चल रहा था, तो we somehow won it in the court। So someone sent a sweet to us every time someone goes to our ancestor house, he sends us sweets, so we somehow have it। तो जैसे वो स्वीट हम लोग ने खा लिया तो ठीक है, उसके बाद मेरे फादर क्या है कि ही कीप्स ऑन विजिटिंग चेन्नई एंड देयर इज अ प्लेस श्री परमबदम, मतलब वहां पे सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं आपके। तो मेरे फादर के कॉर्पोरेट हाउस चेन्नई में, एंड ही कीप्स ऑन विजिटिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सो इट्स अराउंड 100 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, गुड रोड, गुड कनेक्टिविटी।
सो ही वाज ट्रैवलिंग इन एट नाइट, मतलब वो जिस साइड बैठे थे उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में गाड़ी बिल्कुल ही मतलब ट्रक से घिसटते हुए निकल गई। मतलब इफ ही हैड बी सिटिंग ऑन ऑपोजिट साइड, he damn sure he was be dead. Damn sure he would be dead by now. And then comes to my mother. So my mother क्या हुआ? She was coming back from dropping us from the school. So there was a bit. यहाँ पे हमारे दिल्ली में ऐसे थोड़ा फुटपाथ थोड़ा ऊंचा होता है, एंड इट्स डिस्टेंस, मतलब एक सीढ़ी का डिस्टेंस होता है, आपको उतरना पड़ेगा मेन रास्ते के लिए। तो जैसे ही उन्होंने पैर रखा, हर फुट केम ओपन ऑन अ स्टोन एंड इट गॉट ट्विस्टेड, मतलब तो वहीं पे उनका पैर का फ्रैक्चर हो गया उस एज में। ये हो गया। और फिर मेरे साथ हुआ कि मैं कहीं आई गेस ट्यूशन सेंटर जा रहा था, और ऐसे होता है ना रनिंग बस से आप थोड़ा मोमेंटम के साथ उतरने जाते हैं। उतरते उतरते समहाउ समवन पुश्ड मी, और मैं मतलब बाय चांस मतलब बस के नीचे आते आते बच गया। तो ये हम तीनों के साथ हुआ। तो What? मेरी फिर वहां पे, हाँ, दादी ने फिर हमें बताया कि जो जो स्वीट आपको भेजा है, समवन हैज डन ब्लैक मैजिक इन इट, मतलब बकायदा उसके जो व्हाइट पेपर होता है ना उसके पीछे हमने खोल के देखा तो इट वाज रिटन इन रेड, सम मंत्र, सम तंत्र मंत्र बकायदा। और ओनली माय लिटिल ब्रदर हैज नॉट रिटन, एंड ही वाज साउंड इनफ, उसको कुछ हुआ नहीं। तो देन एंड देयर वी हैव टू गो टू द पंडित, मतलब हमारा जो नियरेस्ट पंडित जी है, क्योंकि वी हैड टू गेट द कर्स आउट ऑफ अस। तो ही डिड सम पूजा वगैरह, पूजा अर्चना, एंड ही टोल्ड अस द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम हु हैज डन द थिंग विद अस, एंड वी केम टू नो हु डिड दिस कौन टू था? अस। कौन था? समथिंग सम दादी, सम दूर की दादी हु लॉस्ट द केस अगेंस्ट अस। इनको प्रॉपर्टी हु, चाहिए था। आई न्यू इट। हाँ, उनको ग्रज ग्रज था, तो वही था। ये दो मेरा। चलो वेरी तो क्रीपी एंड नर्विंग। मुझे फर्स्ट आई लगा वाज, दोनों कनेक्टेड है ऐसा लगा, लेकिन या आपने दूसरा ही स्टोरी सुना है, पार्ट टू नहीं था ये, दिस वाज या सेकंड बट स्टोरी। और फर्स्ट ना आई थॉट दैट इट वाज द लिटिल ब्रदर, या नो, देन ही वाज आई वाज नॉट लाइक देयर। ये स्टोरी चेंज हो गया। Anyway, थैंक यू सर अर्नब, शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू सर, वेरी मच थैंक फॉर यू, शेयरिंग थैंक। दैट स्टोरी विद ओके, अस। श्योर श्योर श्योर। प्लीज बी केयरफुल, दैट्स इट। There's always these प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ऐसा कुछ ना कुछ तो होता रहता है सर। कैन आई टेल यू समथिंग मैन, फ्रीकी? It's not in the same zone as this guy. मैं कभी I don't accept sweets and all from anyone. प्रॉपर हाँ, मील दे रहे हो तो चलेगा, करेक्ट। बट स्वीट्स विच नहीं ऐसे। तो गोवा में I think I've talked about this a couple नो, of times. So since Jose, ठीक it है was ना। the butler, Sheetal. No. So हाँ, property disputes are rampant. I don't know if I've talked about this before, but there were people throwing rocks on my grandmom's house. This is when she was alive and she was very old. They were throwing rocks on her house in the middle of the night या यू टोल्ड दिस, to या make her रूफटॉप। feel like something is going on. But she was so fast asleep, she never heard the sounds. That's why that some guy did the same thing with me. He was Yeah. throwing But stones your on my window was terrace. open. No, on my That's- terrace, on the building terrace. But thankfully, I'm on the 7th floor, Mm. and this is a 15-story building, so they were throwing it on the terrace. Well, that didn't land well. But you tried, sir. नहीं Well, उसके लिए अच्छा है। thank you, भाई thank और you, बहनों, bro. इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जूम लिंक, वहां पे कृपया क्लिक कीजिएगा। कृपया क्लिक, कैन यू से कृपया क्लिक, कृपया क्लिक, यू कैन, कृपया क्लिक कीजिएगा। इट्स कीजिएगा दैट मेक्स टफ। एंड आ जाइए आप अंदर, आपका स्टोरी बताइए। चेतन, करण, पुष्कर, आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि योर वेट विल नॉट गो इन वेन। आपको लेकर आएंगे हम अंदर। आप हो वहाँ पे। बिल्कुल। योगी जादव जी, पेजिंग योगी जादव जी, गाड़ी नंबर 302। आज खाने में क्या है सुरेश? पॉपकॉर्न चल रहा है अभी फिलहाल। दिस इज द फर्स्ट डिश दैट आई स्टार्टेड ऑफ ड्यूरिंग दिस द इज द क्या बोलते हैं, एपेटाइजर्स। एपेटाइजर। योगी जादव विल स्टार्ट वीडियो लेटर। योगी नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, एक सेकंड। पीट 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 टिंग टिंग टिंग। नहीं, अपना डायल अप जो है, डायल अप सिक्योरिटी, वो कह रहा है कि प्लीज आपका आधार वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद अरे मैं वकांदा फॉरएवर देखा, कितना मजा आया।
So well done, yeah. Beautiful food. Beautiful film. But you know what I thought about? I don't like telling people when I really like something or something is great because invariably someone will come and say मेरे को मजा आया बिल्कुल नहीं आया. मैं Yeah, तेरे से please, बात yes. नहीं कर रहे भाई. युगी जी कह रहे हैं कि क्या कैन आई प्लीज जॉइन समटाइम लेटर? ऑफ कोर्स Of यू कैन course you लेटर. can, sir. If you don't want to also. नहीं, sure. युगी जी आ जाइए वापस हम चेतन को लेकर आते हैं अंदर. Someone named iPhone is also waiting. iPhone जी हम आपको भी लेकर आएंगे. टेंशन मत लो. How much popcorn do you think you've consumed in your life, Suresh? It's more than most people, I think. I think a whole Hey, cornfield. before we go ahead, I'm so sorry I interrupted you in the middle. Suresh, I noticed that you have renamed your channel, your YouTube channel, to Suresh Menon Official. Really? I Oh, don't have any he clue. didn't I'll have even to know figure out about how it. to. That day I was fiddling around with the thing on. I don't know. Something must happen. So I have to figure out how to just keep it as Suresh. But it's all right. It doesn't matter. It belongs to the MCN of One Network Entertainment. So I'm okay गाली with मत it. दे, but yeah, I was like, कौन है? Who's this person who's impersonating you? That you have to change your channel to official and all. Allowed नहीं है. नहीं, allowed है sir. आपके लिए तो हाँ, तो बोल ना. Allowed नहीं तो allowed नहीं है. आपको जो करने का है. चेतन जी प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिएगा. उसके बाद आपका वेरिफिकेशन के बाद आप आ सकते हैं अंदर. तालियां. चेतन से आई विल ज्वाइन इन जस्ट 1 मिनट. लोग काफी बिजी है. चेतन जी आपको भी हम कतार में डाल रहे हैं. I think दोनों गाली देने वाले थे हम लोग बच गए. कुछ लोग उधर ही रहते हैं लेकिन आपको हम उधर डाल रहे हैं. अरे ऑल राइट. पियो पाव. आदमी सो रहा है. is it a nice different table fan? Oh, that's the Why would you ceiling. have the fan on the table like that? क्या बात कर रहे हैं? iPhone G is connecting to audio. Yeah, it's on Hotstar. I was honestly not expecting to be so great. The stuff in the film that really stuck with me was the emotional bits. So well done. What a great tribute also. मजा आ गया. मैं एक बार अकेला देखा, दूसरी बार while giving commentary to my wife, and then she said, "Ji, shut up, let me watch the film." I said, हाँ ठीक है, sorry. Someone said this is Jose's fan on the stream. Big fan. Medium sized fan है. ये crazy I fan don't है. think iPhone is here. The person is sleeping or whatever. iPhone ऐसा छोड़ देता है. बैटरी कम नहीं हो रहा है. मे बी चार्ज प्लग्ड इन. सडनली आंख लग गया होगा. ठीक है. iPhone G. हेलो हेलो उठ जाओ. You scared the crap out of me, Suresh. Hey, तब तक. अरे मिसेस मल्होत्रा कैसी हैं आप? Mrs. Malhotra? How dare you call me Mrs. Okay, मैं Oh, divorced हूँ अभी. Miss. Okay, You can call me Miss. Miss. सुरेश जी, और आपके लिए तो मैं ये सब बटन क्यों यूज कर रही हूँ? वल्दरमंत आ जाओ. कैसे हो भाई लोग? मेरे घर के ऊपर था. मैं अक्षय बहुत हो गया. एक सेकंड, मैं एक दो सुपर चैट्स पढ़ने के लिए आया. किसी ने कहा है, ये उनका यूजर वाह. नेम है, किसी ने कहा है. इरशाद. नहीं, इसका नाम है किसी ने कहा है, नॉट इरशाद. अच्छा, किसी अच्छा. ने कहा है, उन्होंने कहा है. वेरी टफ. होजे कैन यू प्लीज से हे यू. यस यू. और तो स्माइली फेसेस ठीक है मैं कर सकते हैं. अजीब है. हे यू. यस यू. बस उतना ही उनको चाहिए था. दे दिया. Sharayu says, "Hi Jose, got to catch you guys live after a long time. Extend my greetings to the family, Suresh sir, Jaggu Dada, Hamster, Pariniti thank you. Chokra, Valdarmant." क्या देखा मेरा हाथ का सफाई बोलते इसको. Thank you very much भाई, बहुत ही स्वीट हुआ. Back to business. Let's take our next caller. किसको लेकर आए? Okay guys, do you want to hear MK Singh, Chetan Sethi vibe, a Delhi horror story, Naeem Sarang, Jackie S, Pushkar, Karan, iPhone. Chalo, ठीक है. It's like that card trick ना. One card they keep a little slower, then you pick that card. तो हम Delhi horror story को लेके आ रहे हैं अंदर. और बाकी जग्गू दादा सब ठीक ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटो. अबे अपन हॉरर स्टोरी बहुत बोले अपने साथ भी. हेलो मैडम. हॉलो. क्या हॉलो बोला? हॉरर. अच्छा, जग्गू दादा की आवाज में हॉलो बिकम्स हॉलो. हेलो. Asking to unmute.
Hey Jose, Hi hey Huku, Suresh hi. sir. कैसे Hi, हो? hello, hi. So I'll get into the story. अरे क्यों? अरे थोड़ा relax करो आप. Just I know we only added this pressure to this stream कि जल्दी करो stream. नहीं. पहले आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप कौन बिंदास हो? बिंदास Mhm. So I've been to the stream for 2 times before Disconnect. in हाँ. two different years. हाँ, okay, 2 Two years. different years. चलेगा, चलेगा. Yeah. Bless you. So I'm from Kerala, and this is a story which happened in Delhi. My extended family lives there. So Okay. it happened to my uncle and aunt. सुनाइए. So what happens is one day when my cousin brother, he got into a terrible accident and he was on bed rest, and my aunt was extremely anxious about him, and one day the power was out too, so she was praying with rosary and just moving around the room and just praying, just typically praying, and just when she went to the balcony and she saw the lady who's residing downstairs. So she usually goes downstairs to walk her dog and all. So when she saw her, she was like, "Ah, that's okay. Why is she walking at this hour? It is like late at night." So she was walking downstairs with her dog. She always used to walk downstairs, walk her dog, but it was weird since it was late at night. So when she saw her, she was like, "Ah, why is she walking at this hour?" And then she looked at her, looked at her, looked at her, and then suddenly she realized that she died earlier this morning, the lady with the dog. And she rushed inside and called my other aunt to tell her that she saw this lady with the dog who just died this morning. Yeah, so and wow. and my uncle also, he also came across this lady when she was walking with the dog. You're Yeah. saying two अच्छा, people So saw yeah, this. at the same time, my uncle was returning home from work at the same night, and my aunt, who was walking in the balcony, also saw the lady at the same time. Suresh, I'm sure wow. you have questions, but so do I. One question is, was the dog alive or did they have like a spirit dog also? Yeah. I don't know. Nobody knows. Oh, no one went close to the dog. Actually, the dog died 2 months before that, so I think the dog might be a spirit dog. Oh my god. Which just gives us an Yeah. insight, Suresh, and something we've discussed. It's kind of silly, freaky to discuss. Like animal spirits, Yeah. right? We'll hear about demons and these creatures in the bush and all, but we don't know whether is a cat ghost or a bulbul ghost. Maybe. But I'm very happy to hear that. रात को अगर बुलबुल सुनाई दिया, it's a ghost. Imagine at least the lady was so. She was reunited with her dog, so it was a happy Yeah, ending. that's sweet. Interesting. So, Very but the nice. dog, once the dog had died earlier. 2 months Yeah, earlier. dog had died earlier, 2 months earlier. Oh. Yeah. How sweet. As in The that thing they is met. that all these freaky things happens in Mayu Vihar phase 3, so I don't know who's living there. They might be. Wow, it's the center. As you see, सब energies उधर आ रहे हैं, so pass me. Must be a Anyway. nice place because they're not harmed anyone. They're just taking walks, normal life जी रहे हैं. Yeah, and she doesn't have to worry about cleaning up after the dog. Yeah. Ghost poops. My God. Yeah. तो थोड़ा No, सा that's हवा why निकलते थे. नहीं हवा नहीं. Sometimes when you're walking, that's why you are squish, but nothing is there on the shoes. That means ghost का goo के ऊपर आप step It कर was a लीजिए. Not bad. ghost goo. Nice, very nice. Ghost goo. I Ghost goo. I knew at some point we'd be talking about goo. And it's my fault, totally my fault. Anyway, thank you, ma'am. Thanks for sharing. That was very Thank you so interesting much. story. I വളരെ enjoyed നല്ല that. കഥ. Thank you, Suresh sir. What did you all say Jose, about my family? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? Huh. റോസയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയില്ല. സുരേഷ് സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല കഥയാണ്. Okay. I asked my Okay, mom, but she said I'm too young. Arey, sorry. Arey. Bye. So she was asking you whether you like the story. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. I love this story. In fact, I love these kind of stories. കുറെ ഇഷ്ടായി. Just can say കുറെ ഇഷ്ടായി. Koresh Tai.
I'll forget this in the next 30 seconds. That's I don't fine. know how to. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग. Hey, Saif said the interesting thing. Why are Yeah. you confusing ghost fart with ghost goo? Correct. Very nice. I knew this stream would go all the way. क्या मेरा हॉटकीज नहीं चल रहा है? How dare you? मेरे को बटन दबाना पड़ रहा है. नहीं नहीं ऐसा नहीं क्यों? Hi Suresh. Hello, madam. How are you? Hi. Ta 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 ta. Oh God, I couldn't sing the tune. Madam, वो madam, काजोल आपको का voice change हो गया? ताराराटाटा, छोड़ो वो सब छोड़ो. आज मैं आज क्या मैडम है आप? आज परिणीति नहीं, परिणीति चोपड़ा काजोल नहीं है आज। काजोल आज मैं काजोल पे आज थोड़ा मॉडर्न काजोल हूँ. देखो जोल ना करेक्ट है है। बैंड आप. सर Oh, आप yeah. बहुत फनी हो. उधर Yeah, पेशाब yeah, पी कभी के मेरे कभी ऊपर आप मजाक कर रहे हो. ठीक है एनीवे. मैडम मेरा यूरिन टेस्ट। Amandeep Singh. Jose bro, it's still not too late to do the stream in that black dress. मैं पूछ के आती हूँ बीवी से. कर सकती कि नहीं. Just I see Divyanshi Jain, thank you भाई लोग. Love you guys. We love you too हाँ Divyanshi. Just very much. बहुत प्यार प्यार मेरा प्यार 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 हुक्का बार. Oh hi Suresh. Hi, hi, Good to sir. have you How on. are you? Yeah. Moving on. ठीक है, moving on. Here we go. Oh my gosh. I'm always worried. क्या हो सकता है? Live stream में कुछ भी हो सकता है. अब समझ रहे भाई? My sister's horror story. Hey, Jagguda was this seems to be very normal. That's not. Sir, sir. You sound like there's a drone in the area. Sir, please listen to me now, sir. Mic Sir, testing. Mic Sir, we've testing. spent many years now where you're on the on microphone और मैं पीछे आप director ना. Correct. अभी भी. तो please आप सुनो ना, sir. Your voice is so कड़क ना. You can be whispering, it lands in the next building. आप उधर ही रहो, sir. Hi, madam. Yeah. You don't have to do what Cyrus was doing. You have to be like, hi. I eat the mic. So if you actually see what's happening, I don't believe. Please stop. पीछे. You can do that, but from where I you like are, the sir. reverb that's coming on my earphone. No, sir. I'm really enjoying it. Sir, you're bajaying everybody's. Yeah, this. No. But This I is was an talking- insult to Mongolian throat I was singing. talking softly. My sister's horror story. Mongolian throat singing. Please, Hey. jaldi आओ. Sir, your mic is clipping and then we can't hear you only. Really, for this voice, I'm not in loud. Yeah. We can't hear it only. You've gone past the sound barrier. And yeah, तो जो भी करने के उधर से कर sir. Yeah. This is what I have to deal with for like almost 2 decades. All right. My sister's horror story. Please come on in. I was not eating the mic, but that's a proof of concept that I can. Hello. Good evening. Good evening. Hi, Huku. Hi. I know you have to said unmute hi. her. You have to unmute her, my dear fellow. Hi. Yeah. मेरे को पता है कैसा करना है. Sorry. Although like we regularly follow you guys. First of all, hi both of you, Hi, Hoezaay and Huku. Hi. Suresh. Thank you. Hello. And it has been like my Friday night routine with my mom. Both of us like make sure that we finish our dinner and sit on the yoga mat and like watch horror stories every Friday night. Wow. Very strange because हम लोग Saturday को करते हैं. Yeah. Oh yeah, sorry. I'm just kidding. हाँ Why you तो calling me? This is my mom's story, and so I would just want like without wasting much time, I'll just give the like laptop to her so that she speaks further. Oh, It's her okay. story and a sister's story. Okay. There you go. Hello, auntie. How are Hello, you, Pai ma'am. Lagu? हेलो आई एम फाइन सुनाइए. हाँ मैं अपनी स्टोरी हिंदी में ही सुनाऊंगी क्योंकि मैं फील Perfect. हाँ, थोड़ा हिंदी बिल्कुल में ज्यादा बिल्कुल. ये मेरा काफी पुराना ये है मेरी बचपन का स्टोरी है. मैं जब स्टडी करती थी, अब मेरी सिस्टर 10th में थी और मैं छोटी क्लास में थी, तभी उससे बड़ी जो सिस्टर थी ओवरनाइट स्टडी करने की हैबिट थी. वो अपने फ्लास्क और ये सब लेके ओवरनाइट पढ़ती थी. तो मैं डैडी ने बोला कि इसको भी पुश किया कि इस बार तुम्हारा 10th है तो इस बार तुम ओवरनाइट जगने का विजयदशमी के दिन तुम उसको शुरू करो. तो सिस्टर ने उस दिन तैयारी करके शुरू किया, बैठी अच्छी तरह से और ओवरनाइट का उसने पूरा जैसे बड़ी सिस्टर को देखती थी वैसे ही अपना फ्लास्क वगैरह लेके बैठ गई
और मैं और वो दोनों एक साथ सोते थे। हमारा दोनों का बेड एक ही साथ कंबाइंड था। हमारा रेलवे क्वार्टर बहुत पुराना, जिसमें साइड में एक बहुत ह्यूज बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें अंदर तक भी आती थी। और रेलवे क्वार्टर का जैसा 2 बेडरूम सामने की तरफ, और सामने उस साइड सामने की तरफ एक किचन और स्टोर रूम, थोड़ा सा सामने स्पेस के बाद। तो उधर की सारी लाइटें ऑफ हो गई थी और सब लोग सो रहे थे, सिर्फ इसके कमरे का लाइट जल रहा था। मैं बेड पे थी। अक्सर हमारा दोनों बहनों का ये होता था कि ज्यादा सर्दी में हम दोनों साथ सोते हुए रजाई का खींचातानी बजता था। मैं रजाई खींचती थी, जब मुझे नींद खुली तो वो अपनी तरफ खींचती थी, जब उसे नींद खुली तो इस गेम में मतलब अक्सर दोनों का ये आधा खुल जाता था बॉडी। तो उस दिन क्या हुआ, तो हमें पूरा फ्री मिला था। मैं आराम से सो रही थी, इसी मैं तो नींद में थी, मस्त सो रही थी। इसको जब रात बीता, आधी रात के बाद, वो सामने की तरफ कुछ सोचते हुए स्टडी कर ही रही थी अपने धुन में। तो सामने जो स्टोर रूम था, किचन से जस्ट जुड़ा हुआ, उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। तो इसने देखा कि सामने की तरफ जो थोड़ा दरवाजा आधा खुला है, वहां से एक कोई वाइट साड़ी में लेडी जा रही, जिसका सिर्फ बैक दिख रहा है। और वो उस थोड़ी से स्पेस से ही इसने और आंखें विस्फारित करके देखा कि ये सच है कि सही है कि गलत है। तो आंखें और चौड़ी करके रुक के देखा, तो उस लेडी के माथे से जो व्हाइट साड़ी थी, वो थोड़ा गंदा सा ही था, लेकिन पिंक स्पॉट भी उस पे दिखाई दिए उसे। पिंक पिंक जैसे कलर, कुछ पिंक डाला होता है। तो ये रुक के और थोड़ा ध्यान से स्तब्ध होके देखने लगी। देन वो लेडी अंदर चली गई। और बाद में जब ये और सोची कि ये सही है क्या गलत है, ध्यान से देखती रही, उसकी पूरा बॉडी जड़ हो गया। तब इसने देखा कि वो जो अंदर गया शरीर, वो वापस जैसे लगा कि पूरा बाल आगे को चेहरा ढक के और सिर्फ दांत निकाल के से जोर से भींच के देखा उसको। तब तो इसके पूरी हालत बुरी हो गई और वो दौड़ते हुए बाजू के कमरे में भाग के गई कि मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, ऐसे मतलब चिल्लाते हुए। और भाग के दूसरे कमरे में जब उसने सारी लाइटें ऑन करना चाहा, लाइट तो ऑफ थे, तो एक दो स्विच मतलब ऐसे जल्दी में हुआ या पता नहीं, बल्ब भी फ्यूज हो गया और नहीं जला कोई भी लाइट। देन उसने चिल्ला के जो गिर गई, तो मम्मी मेरी थी, मेरे पापा रेलवे स्टाफ थे, तो 3-4 दिन में आना होता था। मम्मी ने उठ के बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, घबराओ नहीं, उठो, कुछ चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। और बाद में उठ के और भी 1-2 भाई बहन जग गए थे। और मैं उस कमरे में, सबने पूछा कि क्या 1-2 भाई बहन जग गए, तो वो लोगों ने पूछा क्या हुआ, आखिर किसका मर्डर हो गया। माँ भी पूछी किसका मर्डर है, तुम सपना देखी हो ऐसे। नहीं नहीं मैं जगी थी पूरी तरह से। तो मम्मी ने बोला नहीं नहीं चलो देखते हैं। तो मेरा नाम लिया उसने कि मेरा मर्डर हो गया, किरण का। देन फिर सब लोग थोड़े सहमे भी थे, फिर माँ ऊपर से बोल्डनेस दिखाते हुए और कुछ स्टिक वगैरह लेके साथ में सब कमरे में घूम के, लाइट जला के घूम घूम के, नहीं कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। इतने मैं क्या थी, मैं रजाई जो छीना झपटी होती थी ना, उसमें मैं रजाई लपेट के खींच के मैं बिस्तर से नीचे गिरी हुई थी। तो मैं रजाई में लिपटी हुई नीचे ही सो रही थी। और उन लोगों को और सदमा लगा कि सच में मैं दिखाई नहीं देने, उन लोग तो बिस्तर देखे, तो उनको बहुत झटका लगा। देन No! Are the Wi-Fi Hey! just Wi-Fi will come back. Wi-Fi will come back. You broadband? क्या हो रहा है? Oh my God! और बाप रे ये लोग Maybe if they switch off the video and just continue talking, नहीं we नहीं may अटक ही get गया an ना, end. we were able to अटक ही hear a गया. voice. Yeah. But सुरेश ये लोग they took a stick और भूत को मारने गए थे। नहीं कुछ भी मतलब कुछ तो हाथ में रखना पड़ेगा क्या ना. You never solid know. story था यार, my God. So really, In a way maybe it's good that it doesn't continue. मैम अगर आप वापस आ सकते हो तो प्लीज ट्राई करना। they won't be able to use the chat also to say, hold on, wait. Maybe ISP का कुछ Oh, maybe the creature has come. No, I disconnected so maybe they can come back. The creature I disconnected their LAN cable.
ऐसा मेरे बारे में उनको बता रहे हैं. Did you talk to me just now? Oh, freaky! What a story that was. Okay, waiting Wow. for season 2. Agasti. Man, Suresh, what did you do? Those are very freaky. But you know, people who have kids, they're used to this sort of thing because kids end up coming out saying that मेरे को दिख रहा है कोई उधर खड़ा है, or they have these crazy dreams, right? Because their brains are still developing and everything's still forming. But to have your kid come out and say, I had a dream or you got murdered. Hey. One day my kid did that with me. So I told him, listen, even I can see somebody standing there, but I do it call. Keep on telling you that. He was just telling you. You decided to go on the offensive with Yeah. your kid, you crazy guy. Then Shailesh I ji, heard I him. saw your message. You know, thank you. You can stop now. Shailesh ji, take a break. Drink some water. मैं try करेंगे. What's happening? Christopher Nolan taking notes. All right, my sister's horror story. Maybe we can they're still here in the Zoom room. Let's see if we can try to bring them back. मैं try करेगा. Sir, you know me, sir. I'm doing the best I can. Pushpa. Flower nere, fire. Stranger Things से danger cliffhanger. I'm trying, Syed ji. I'm trying. Yes, please. I think yeah, उनका network में थोड़ा गड़बड़ हो गया. All right, let's keep going. Oh, all right. See, there's always someone who sends us a message saying 10 on 10 story, 12 on 10 story. Yeah. Now I can just leave it there, or I can be like, chalo try kar. When I said that, they disconnected. Very strange. I guess it was not a 10 on 10 internet connection. But all right, let's keep going. Ding, ding, It ding, happens. ding, ding. Maybe वहाँ का light चला गया होगा. Next one coming in hot. Story from From Jharkhand. Jharkhand. अच्छा तेरे को दिख रहा है वहाँ पे because you're on the Zoom call. Got you. Just checking. I rewatched True Blood. Have you seen True Blood, Suresh? True Blood, no man. Hotsta bhi अच्छा है. Then I realized how strange the last 2 seasons were, but अच्छे थे. Two All black right. boys telling us the story. कैसे भाई लोग आपको लेकर आ रहे? Last two. Curtain के पीछे कोई छुपा है क्या? Yeah. कैसे हो भाई लोग? 1 minute. That blanket looks so comfortable. Yeah. Hello. Kazakai. From where? Are you guys calling from Jharkhand also? Yes. Yes. ठीक है. Both are Jharkhand, कैसा- but we are काफी ठंड है वहाँ पे. नहीं, Delhi. We are in Delhi now. Oh, अच्छा, okay. वहाँ पे भी. वहाँ पे भी ठंड है. फिर मुंबई में खत्म हो रहा है ठंड. खत्म हो गया. आप लोगों को पता नहीं हम लोग का क्या सीन है. कल यहाँ से पूरा मेल्टिंग. हीटर चला के हुए हम लोग. ठीक है. Anyway, कौन सुनाएगा स्टोरी? Okay. Hello, sir. It's my story. Okay. My सुनाइए. name is Aditya. Hi Aditya. हाँ, आदित्य. I hail from Chaivasa. It's a small town in Jharkhand. Basically, it's near border of Odisha. All right. Oh, okay. Okay. So it was around 2008, and we used to live in a rent building. So ऐसा होता है कि मेरा भाई और मेरे भैया के दोस्त, हम लोग का ऐसा होता है कि हर सैटरडे संडे सुबह जल्दी क्रिकेट खेलना होता है, तो हम लोग छत पे जाके खेलते थे. सो सेम एक ऐसी मॉर्निंग था, अराउंड सुबह जल्दी तो उठना होता है, 4:30 अराउंड हम लोग उठ गए थे और हम लोग ऊपर जाके वेट कर रहे थे. तो फिर वहां जाके हम लोग का होता है कि भाई बोलते कि अरे यार तुम बॉल तो लाया ही नहीं, जाओ नीचे से बॉल लेके आओ घर से. तो ओके फाइन यार, ठीक है. मैं गया. उसके बाद मैं जब वापस गया तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा भाई और उसका दोस्त ध्यान से कुछ देख रहे हैं. सो इट सो हैपेंस कि हमारा घर के पीछे एक रेलवे ट्रैक था, एंड वी सॉ a lady in white sari crossing the tracks. Oh, crossing the tracks. Thank God, huh? Okay. I mean वहां तक भी चलो चिल है सब कि like यार maybe some lady, ठीक है. Yeah. But the creepy part was when she was trying to cross, like एक थोड़ा सा body movement होता है ना कि like shoulder there are all stones around the tracks, big stones.
एक काइंड ऑफ एक बॉडी मूवमेंट होता है ना, योर शोल्डर्स आर मूविंग एंड ऑल दैट, वो उसका कुछ बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा था. शी वाज जस्ट लेविटेटिंग फ्रॉम दिस साइड ऑफ द ट्रैक टू द अदर साइड. Bro. स्केटबोर्ड, होवरबोर्ड. I mean, like she was like straight, kind of straight. There was no movement at all, and It was it's just going like this. exactly, sir. Exactly. एज तुम्हारा क्या था? तुम्हारी फट गई होगी यार. मैं तो छोटा था, अराउंड क्लास 6 में. और ये मैं दिन में, रात में? रात इस को? 4:30 अराउंड सुबह. Early morning. अच्छा, still Early dark morning. then. Okay. क्या बात है, क्या बात है. And लेकिन एंड सर हम लोग उस ट्रैक को क्रॉस करके जब वो किसी झाड़ी में घुसी, एंड वी वेटेड फॉर अराउंड लाइक 1 hour टू लाइक फॉर हर टू कम आउट ऑफ इट. शी नेवर केम आउट. so okay, just तुम लोग a के पास small बहुत टाइम है. maybe one small spanner small spanner in the works maybe. No, you know, it's not. somebody's It is white not what sari you're just thinking, sir. somebody's white sari just blew away in the wind, and it was at that particular moment when you all saw, you all picked it up from it crossing the Oh, tracks. yeah, could be. And it could went be. inside, went Very inside interesting. on the other side of the bush, and you're waiting for a lady to come out. I mean, Cool observation, sir. I mean, like we were not convinced. Like we like Yeah, yeah. Or Have what we- also, obviously. yeah, exactly. Like it Yeah, was it's very wasn't scary making too. sense. It takes some time to accept what you have seen, and then perhaps then put your logical mind. But I don't think there's any logic. The best thing is just run. No, but sometimes light can play crazy tricks on your eyes, and it could just be a matter of circumstances and some reflections in a special spot. You're standing in a weird spot and you ended up seeing something crazy. But who knows? Yeah, totally. You know, But in Mumbai local train circuit, railway tracks, we have seen worse than this. But Yeah. I think But what people is, taking a dump on the tracks. we although see. this went from scary to funny. Somebody made a really funny comment and they're saying that maybe she just wanted to take a dump, and then जाने के बाद because of you guys, she used to wait there till you guys left. तो वो छुप रही थी अंदर की. it all Yes, makes sir. sense now, sir. Yeah. And some ladies telling us, "हमारा 4:30 बजे हम गए थे वहां पे, ये 4 लौंडे वहां बैठ के घूर घूर के देख रहे थे, हम भाग गए, कूद So के चले गए." it's everybody from that area is waiting, hiding there. Uncles, aunties, सब लोग उधर बोल रहे, दो बंदे क्या देख रहे हैं वहां से, हम लोग करने नहीं दे रहे. Anyway, take care, guys. Thanks for sharing your But story. that was great. That was a great Freaky visual, unnerving. visual Thank though. Very unnerving. Yeah. Thank you. Thank you. Bye bye. सुरेश, क्या artistic imagination है आपका? The white sari was floating. Somebody let go of a full lovely white sari. Sari was Also- so expensive. Also, if the tracks were electrified, it would have been difficult for anything to fly through. But it was quite crazy. What a crazy story. But that twist was very funny. Them waiting for an hour after that, nobody came out. That was nice. Oh God! Wow, pure gold. सुरेश जी, कैसे हो आप? You did not expect I would come in. I could not rhyme with expect. मेरे घर के ऊपर तार. मैं हूँ अक्षय कुमार. सुरेश की पड़ोसन. Sir, सुरेश जी, अब आप रात हैं? को आते क्यों नहीं? सुरेश की पड़ोसन. सुरेश की पड़ोसन. आप दरवाजा तो खोलिए. मैं भी हूँ बाहर. वाह, सुरेश की पड़ोसन. क्या बात है. मेगा चांद, thank you very much. मेगा चांद with a lovely dancing emoji. सुरेश की बड़ोसन, thank you very much. बेचारा. सुरेश की पड़ोसन. Thank you very much. एक्चुअली 40 वो रुपए के लिए. सही है, क्योंकि दरवाजा खुला रहेगा तो सिर्फ सुरेश नहीं, मच्छर भी आ जाएगी. And I'm just for a change, I just went through all my पड़ोसन Yeah. and I realized कि कोई नहीं है पड़ोसी में. ऑलराइट, सॉरी, कुछ मिस हुआ कि नहीं? हाँ, खुश गुप्ता भाई, न्यू ईयर के बाद गैस बुलाने बोला था. यस यस, सब लेके आएंगे. मैं भूल जाता हूँ, मैं रात भर एल्डन रिंग खेल रहा हूँ. नहीं, मैं बुलाऊंगा. मैं अभी तक प्लान है. आई होप वो मेरा कॉल उठाता है, जय अलानी. मैं उनको अगले हफ्ते के लिए डेफिनेटली बुलाऊंगा. ये दोनों खुद मेरे को लास्ट मिनट कंफर्मेशन देते हैं. अभी क्या बताऊं?
आकिया नॉट यू सुरेश, आपने किसी और के बारे में मैं बात कर जब रहा भी था। कुछ होता है नहीं, नहीं, नॉर्मली, और हाँ, आज नहीं, आज actually, आज सुरेश एक always सेकंड, हाँ बोलता है। अक्षय जी, क्योंकि आपने ये ऐसा एक अक्षय जी, अननेसेसरी एक मतलब एक्यूज किया है मुझे, इल्जाम, मुझे इल्जाम, इल्जाम आप इल्जाम लगाया जुल्म मुझ पर। बोलने वाले थे। करेक्ट करेक्ट, इसके लिए जल्दी समझिए। यस, 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 इल्जाम लगाया मुझ इल्जाम, पर, और जुल्म, उसके बाद ऐसा एक जुल्म, जुल्म जो आपने किया है। एक मुल्क, मुल्क इसमें नहीं सॉरी आई आएगा। मेंट मूर्ख। नहीं, मुल्क भी चलेगा, सारा मुल्क खत्म खफा है तो आपसे करने कि दो साले। ओह सॉरी। तो अकी बेसिकली सेज वेरी सिरिल कितना पानी पीन रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है पानी सिर। छोड़ भी रहा है कहीं पर, लेकिन लेकिन मैं फिर से मुद्दे पर आना चाहता हूँ सर। हाँ, अगर आप यकीन मानोगे, आज मैंने आपकी तरह डेयर डेविलरी दिखाकर क्या अपनी बात है। बीवी से कह दिया कि होजे को मैंने बोला है कि स्ट्रीम करना है, इसके लिए मैं बाहर नहीं चलूंगा आपके साथ। ओह, इसलिए मेरे इतना को इतने सारे हिम्मत, गालियां मिला वो अनोनिमस नंबर से। पता खत्म नहीं यार। करने दे साले। अमनदीप सिंह says जोस ब्रो स्टिल नॉट टू लेट टू वेयर द स्ट्रीम बैक टू। सॉरी, मैं दूसरी बार पढ़ लिया, आपका पूरा वसूली हो गया। एनीवे, बैक टू बिजनेस सुरेश, लेट्स कीप गोइंग। ओह गॉश, प्लीज प्लीज प्लीज, आगे बढ़ते बहुत हैं। अच्छा रहेगा। हाँ, भूलिएगा मत, if you're just tuning in, I'm very sorry that you did this and that this is happening to you. And if you feel like hitting like and subscribe, find a reason and then hit like and subscribe. Okay, ठीक है, थैंक यू। प्लीज आप सजेशंस आप लिख सकते हैं, ट्राई तो करेंगे। ओ माय गॉड, सिलवासा, बाप रे, सिलवासा का नाम सुनते ही मैं कभी कभार कांपने लगता हूँ। वहाँ पे ठंडी है ना, इसलिए। ओह आई थॉट यू वर गोइंग टू टॉक अबाउट सिल्वर चेन। सुरेश जी, आई हाँ, 1 मिनट। थोड़ा ट्राई किया मैंने, अच्छा था, लेकिन अच्छा कोशिश था। सिलवासा जी आ रहे, लेकिन सुरेश जी, अरे बोलिए। यार, अरे ये हॉट की तरह नहीं चल रहा है। हाय, कौन है? हेलो, टक टक। नो, सुरेश, सुरेश की पड़ोसन, सुरेश जी आपका पड़ोसन ने एक और मैसेज भेजा आपके लिए। अरे मैं बिल्कुल, आपको पपी देना चाहती हूँ, मतलब पपी, और वो छोटा अरे वेरी गुड। कुत्ता और एक किसी का इमोजी है, तो वो आपको पपी देना चाहते हैं। आप जाइए, मेक श्योर द पपी गेट्स इट्स शॉट्स। ठीक है, मैं अभी आया। अभी नहीं। ब्लेस यू। पड़ोसन ने बोला तो देख के आता हूँ। 10 on 10 सिलवासा। Hey, don't really go, सुरेश। सिलवासा जी आ जाइए आप। ओह माय गॉड, आई वाज लाइक, ये सुरेश के घर अरे में कौन आ गया? मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट पानी का बॉटल लेकर मिलिट सुमन को लेकर जा रहा हूँ। सुरेश, थोड़ा ऑयल डालना चाहिए वो चेयर के नीचे, बट यू माइट स्लिप। Yes. सिलवासा जी आप भाग गए फिर से। कांट अनम्यूट। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना, टेंशन मत लो भाई। अरे, I pressed the wrong button. I don't even know. Let's do that again. Here we go. All right. Mr. Silvasa, asking you to start your video. And now asking you to unmute. Yeah. Is it okay if I like keep my video on? Absolutely, sir. It is not a problem. Yeah. Just पहले I'm a अपना great verification कर दो. Sure. I'll do that. Hi. Yeah. हाँ, हो गया सर, अभी बंद कर सकते हैं. So I've been trying to join since a very long time. So Sorry. like this is a story which happened in like 2010 or 11. I was in my 8th or 9th standard. Okay. So according to me, it's like a 9 out of 10. So others, you guys can decide. सुनाइए. So basically what happened is like me and my family, we were around 6 people. So me, my mom, dad, my nani, masi, and a brother of mine, like my masi's son. So we had gone to Silvassa for a 2-night, 3 days holiday. And we had booked a room. It is a very famous resort. So the room structure was basically, there were 2 rooms which were connecting, and there was one room opposite the first room. So all on the ground floor. समझ गया. So you understood the layout. Now basically 2 rooms, beach mein door hai. It is a connecting room. समझ गया. Single bed proper, the regular category room, and the other room in front, exactly opposite, the other side. So my parents were in one room, me and my brother were in one room, and my nani and my masi were in the other room. The one which was connecting, basically. So like first night, nothing happened as such. So second night, what happens is that my parents, so my dad had slept. My mom was watching TV, and she, like around 1:30, she switched off the TV and then she went to sleep. So she clearly remembered that she had switched off like the button
properly. Mhm. And my brother had a habit of sleeping like very early. So like 10:30 he went off to sleep, and I must be in around 7th or 8th grade. So I was sitting with my Masi and Nani as they were awake, and we were just talking normally. So what happens is at 2 in the night, my mom comes in my Nani's room. So she basically rings the bell. So my Masi went and opened the door. I was awake, so this is no like kind of a dream or something. I was awake, my Nani was awake. So my mom enters the room. She was very, very scared. She told that the TV suddenly switched on, and I'm damn sure that I had switched off from the switch, and the TV had switched on itself. So she enters, she's freaked out, she goes and sleeps next to my brother. So in the connecting room. Hmm. So me, my Nani and Masi were just having a small discussion. So 2-3 minutes later, the light goes off for the entire resort because it was a ground floor room. The street lights of the resort are visible. So there is no light there. So we realized that the entire resort ka light has gone off. So 10 minutes. Hello? Yeah, हम लोग सुन रहे हैं भाई. Yeah, सुन रहे भाई. So 10 minutes after this, so the light comes back. There's one more ring, the bell. So my Nani figured out that it must be my father. So they opened the door. Just 1 minute, I'm getting calls. So But bell Yeah. कैसे बजा? अपना अपना नमस्ते बोलना जो भी कॉल कर रहे हैं. no, I disconnected. So bell कैसे बजा? मतलब light आ गया था. So this अच्छा. is light came back like in 7-8 minutes. समझ गया. उसके 4-5 मिनट बाद बेल बजा. तो मतलब तभी डैड सोए हुए थे. तो my Nani and Masi thought कि डैड रहेंगे, तो they rushed and opened the door. So my Masi went and opened the door. It was not my father. A couple walks in. 5'11", 6 feet tall, both husband and wife. The husband was in formals. The wife was in salwar kameez. A yellow salwar kameez, and husband was in white shirt and black pants. I still remembered. And they come inside. The freakiest part was they were floating. Oh, They okay. were floating. There is more to the story. I'll tell you. I'll complete the story after that. So what happened simultaneously? So this happened. My Masi started chanting, and we knew that this is. I was too young to realize, but everyone in the family knew what was happening. My mother slept. My brother is sleeping. Dad का अभी तक किसी को idea नहीं है उधर क्या हुआ है, which we'll come to know in the morning. And Masi, Nani, and me, we were completely awake. So they disappeared like in 7-8 seconds or 10 seconds, hardly. So we were awake. My Nani was sitting near the window in the morning. It was already 5:30. She sees my father walking near the alley. So basically, छोटा सा under swimming pool area side था. So वहाँ पे my father was walking. And so my Nani obviously called him, and she told what all things happened. My father said after my wife left, like so my mom left, someone was pressing my neck. I went to the reception. I was sitting there along with a chaddar around my head, and I was like telling them what is wrong and what is the shit going on. No one in the hotel agreed. But what happened next day while checking out, basically, so we had 3 nights and 4 days. Sorry, so we decided to check out. And koi hotel, if you tell them that this has happened, no one will agree it, and refund to bahut dur ki baat hai. So there's a small Hanuman temple in the hotel. So the guy, the Pandit over there, we told him these all things happened. He said the room, the connecting room, basically, where my brother was and my mom slept, in that room, there was a couple. The husband got a heart attack and the wife committed suicide in that room. And this hotel is exactly near the bridge which had collapsed years back with school children. Incident had happened. If you know, near Silvassa, there was a bridge which collapsed. Oh yeah, long time back. Yes. So this is right next to the property. So this is a property very next to the bridge. Freaky, Freaky, and quite unnerving. freaky. Absolutely unnerving. तो तुम लोग you're left in the next 3 minutes or So yeah, what happened? so what happened after that, we didn't extend basically, and when we told them this, they immediately refunded us for all 3 nights. Oh, Yes. So this was the confirmation basically for us that something is wrong. yeah. No one agreed, nothing. They were like, okay, sir, we'll refund it to you.
That's it. दिलक सर हम लोग इमीडिएटली आपको रिफंड दे रहे, प्लीज कोई यूट्यूब पे किसी को बताना मत ये चीज। और I'll tell you the name if you want to. I'll नहीं put नहीं it नहीं on your रहने दो DM. रहने दो I'll रहने put दो। it on the DMs. ठीक है So somewhere I'll put आपकी it. मर्जी, बट It's still functional basically, the hotel, and it's a Oh very big God. hotel. So if that hotel Freaky. near Silvassa, somebody is hearing this, please do tell us your experiences too in recent times. Did anyone else experience this? Let us know. Please आ जाओ हमारे स्ट्रीम पे। Thank you bro, thanks for sharing that with Thank us. you so much. Very Very creepy. interesting I'm a and great quite. fan, great fan. I've been binge watching your content. It's unfortunate. I'm so sorry this is happening to you. And we can give you numbers for help. And thanks, buddy. Thanks so much. Very Thank you. humble Thank fellow. you. Have a nice Thank day. you so Bye. much. Bye. Thank you. Good night. 10 out of 10 indeed. Bumble. Yeah, very freaky story. But you know what now, Suresh? Now the explanation. See, we Yeah. go from it's our coping mechanism. Horror say Correct. to comedy. And what we perceive as comedy. I'm thinking, new guy first day on the job. And they had called and said, please, बहुत दर्द हो रहा पैर में, मसाज के लिए आप आ जाना। तो वो जाता है, वो फर्स्ट डे ऑन द जॉब थोड़ा नर्वस था, was a little dark, and he pressed the neck by mistake. जल्दी से वो चला गया वहां से, ran and went, and then that's why the refund also happened so quickly. Thank you everyone, thank you, like debunking stories. Yeah. And what with about amazing those couple explanations. who walked in 6 feet there floating in the air, उनका क्या? See, I'm not an expert. तो मेरा आधा मैं कर सकता, पूरा मैं नहीं कर सकता। समझ गया, समझ लगा ऐसे, ठीक है। बहुत अच्छा था, कोशिश बहुत सही था। Freaky story. लेकिन I'm not finding any What? loopholes. This is a true story. Because you didn't find any loopholes. Yeah, because I'm getting a cold shiver inside when I'm thinking of this. But you know what's crazy? For me, the freakiest ones are where multiple people have experienced the same thing. How do you explain that away? Those are like mass Which one? hysteria and all. Like Which many one? people experiencing the same thing or seeing the same thing or whatever. Yeah, so it's not possible technically. If it's supposedly some ghost or something from the other side. Neil is Oh saying, God. what horrible debunking. Neil, आप नए हो क्या? Oh, sorry Neil, माफ करना, हम आपके expectation तक नहीं आए। Funny, very funny and unnerving. Let's keep going. भाई बहन लोग, अगर आपको पता नहीं है तो Sisters आपको horror पता story. होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलो? Sisters horror story. I have to have a closure on that story, Oh please. yeah, नहीं आए वो लोग अभी तक। They're not back yet. Hey, thank you मैम, बहुत मजा आ गया स्टोरी सुन के। Great story. थोड़ा क्लोजर चाहिए था उसमें बस। Closure. Meanwhile, Close don't forget to hit like and subscribe on good channels where there are good videos, and even here if possible will really help us out. A big hello to Harami Chat. हम लोग officially Harami Chat से बात नहीं किया। बीच में मैं देखता हूँ Chat is funny ASF. हमारे जमाने में ASL होता था, इधर ASF. ASMR. 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 Man, Suresh, such a lunatic, bro. Yeah, stream elements deleting messages with new emojis. मारेगा ये stream elements को, कैसे ठीक करूँ? रुको मैं। अरे रिया जी क्या कर रहे हैं आप? रिया जी है ही नहीं वहाँ पे। रुको। मेरे आंधे रिया जी। रिया गए रंगों क्या वहाँ रिया से जी आपका ऑडियो अभी तक कनेक्टेड नहीं है, तो कर सकते आप कुछ अपने ऑडियो वीडियो के साथ। रिया विल स्टार्ट वीडियो लेटर। रिया आपका ना तो ऑडियो है ना तो वीडियो है, तो हम लोग क्या स्टार्ट करें? ए रंजीत का अच्छा ये था saying one person claiming multiple people had the same experience is totally different होजे। ए मेगा मला माहिती आहे, मी जोक मारलं। पर हाँ रंजीत LOL LMAO हाँ चेयरमैन LMAO वो मेरा हिप कैट क्या बोलते हैं LMAO। बाप रे सुरेश आएगा सब हैंग विद यू। मेरा भी दोस्त बोला मेरे को एलए में आओ। अरे रिया जी now just audio has to get fixed। रिया जी you can do it। रिया जी कैसे करे? रिया थिंकिंग अभी मैं कैसे करे? कौन कोई उधर है कि उधर किधर उधर किधर नीचे कोई उधर है? told you to shut up, चुप बोला चुप। Sorry मैम। So just coming back to
LA में आओ. ठीक है, रिया जी आप ट्राई करते रहे ना, सुरेश जी आप बात करते रहे, रिया जी ओह यस यस आई थिंक रिया जी का ऑडियो कनेक्टेड है, मैंने बटन नहीं दिया है शायद। मैं कब से तेरे को बोल रहा हूँ अनम्यूट कर करके, प्रॉब्लम क्या रिया है? जी बट ऑडियो का कनेक्ट हुआ ही नहीं ना, रुको रुको एनी मोमेंट नाउ। मीनवाइल आई जस्ट आंसर वन क्विक क्वेश्चन, somebody is Connect. asking I have to कि say this. Hi. Hi. hi क्या टाइमिंग, हाय Oh हाय my रिया जी। God. एनीवे अरे हरमीत, रिया जी आपके सिस्टर ऊपर देखिए. हेलो सिस्टर, Hi. कैसी है, क्या कर रही? I'm good. How about you? चिलिंग रे। रिया जी कहाँ से बोल रहे हैं आप नहीं बोल रहे। नो, आपका हेडफोन्स का वॉल्यूम बहुत कम है और अभी सडनली इट कांट हियर, सो इट्स बेटर दैट यू यूज अ कंप्यूटर ऑडियो ओनली. This stream brought to you by SureshTechnicalAdvice.com. थैंक यू. एंड एलएमआई कर रहा था, केरला में Oh, जाएगा तो लोग बोले एलएमआई खाओ. अच्छा इन गोवा चाले माओ, हाँ. छोड़ो ना। रिया जी कैसे हैं आप? बढ़िया. आप कैसे हैं? मैं अभी क्या बताऊं आपको, दर्द हो रहा है बट आप रेडी है? Yeah, Jose, I कौन है have उधर? been trying to come to your stream from the time you started the stream. This ओह, is the first time I got into it. बाप रे बाप, I'm sorry आपका इतना टाइम वेस्ट हो गया और अभी और भी टाइम वेस्ट होने वाला है। I never imagined कि I could get into it. एक के बाद एक हादसा, आप कैसे डील करेंगे? Yeah. Even when Cyril was there, हाँ वही है साइरस. उसका नाम। Cyril and all साइरस. Suresh, she have हाँ taken my name so many times. Cyrus have taken so many time my name, but yeah, never pulled me up. एनीवे रिया I, जी, Yeah, I just logged very into bad. Zoom and I'm here. It I'm is lucky, I guess. the same suffering that we doesn't let us speak also at times. Anyway, ma'am, please. Can I stop my video if you don't यस mind? मैम Sure. एब्सोल्युटली, Yes. टेक इट Sure. अवे। आपका आधार वेरिफिकेशन हाँ हो गया, रेडी मैम। Sure. So I have a story. I have lots of stories actually, lots of experiences in my life, but I want to share this one, which is very recent to me, I'll say. ओके So, not the most recent one, but yeah, it's also recent. So this happened during COVID, when the COVID act was at its peak in 2000, like 2021, 22, 20 that time. So I stay in Bangalore. I work in Bangalore. So I was ओके staying in a two-bedroom apartment with my friend. So during Corona, she went home and I was stuck in that apartment for three to 4 months. I was डैम staying alone. So I have been staying in this house for last 3 years. Keep that in mind because I never experienced anything in my life. In this house particularly. But that one night, what happened? I was just working. I was sitting and I was doing my work. Work from home चल रहा था. तो सडनली ऐसे मतलब घर पे कोई था नहीं तो हमारे रूम का लाइट ऑन था एंड किचन का लाइट ऑन था. सो माय रूम, the bedroom, sorry, the bed was in such a way that if I sit on a corner of my bed, not toward the head, पैर जहाँ पे पैर जिस तरफ करते बैठ के वहां के पास अगर बैठे तो I can see the half of my hall and the kitchen completely. There was a and there was a balcony just beside my room एंड बेड के ऑपोजिट में एक बाथरूम था जो कि बाथरूम दोनों बेडरूम के बीच में था. सो देयर वाज टू डोर्स इन द बाथरूम connecting both the bedrooms, and my friend's bedroom was on opposite side. Now there's no one in the house. I'm alone. So I'm sitting suddenly and I felt that there's like सारे घर की लाइट ऑफ है, सिर्फ किचन का लाइट ऑन है और बेडरूम का लाइट ऑन है. तो सडनली ऐसे फील हुआ ना कि किचन से जैसे कोई पार हो गया, तो वो यू कैन सी द शैडो राइट जस्ट मूव्ड. सो आई चेक्ड कि कहीं गलती से कोई दरवाजा खुला रह गया है, कुछ हुआ है एंड ऑल दैट. There was nothing, but I saw a shadow. Then I was in the hall after some time, like for dinner or something, and then I felt that there's somebody in the bedroom, like in my friend's bedroom. So I felt a little weird, so I locked the door. और फिर अपने रूम में आ गए. Now it's a single bed in my bedroom, and I'm just like around 11:30 I went to bed. It starts with a dream. So I went to bed around 11:30. So maybe आधे घंटे बाद नींद आई होगी.
And when I started dreaming about something that me, it's all dream, okay? That me, my parents, and there's somebody else, we went to visit some place. It's basically a village, गांव type का है. वहाँ पे हमें कोई एक मंदिर दिखता है. Like there's a temple, there's some goddess. I don't know which goddess it is, but there is some goddess. And this temple does not have any walls. It's just the place, four pillars, and the roof. Nothing else. It's all green. And four pillars are just the roof. And पीछे दो तीन पेड़ है बड़े बड़े से. Now, as we go toward the temple, I felt something in my dream, and I entered the temple and I started praying to that goddess in a very weird manner. Like हमारे हाथ पांव मुड़ जाते हैं, and I started taking circles toward like idol के चारों तरफ घूम घूम के परिक्रमा बोलते हैं ना, started doing that and all. And all the गांव के जितने लोग हैं and my parents and whomsoever are there, they're standing outside and they're just looking. And I complete the entire ritual and then come out, and the gaon wala was like, how do you know it? Nobody knows about it. We don't even do it in this temple. No, koi puja nahi karta yahan pe. Why do you do it? And as soon as I finish that ritual, I see a lady. I see a lady coming towards me. This lady is also wearing a green sari, red pad green sari, like a big red bindi on the head, and she has long black open hair, not tied, it's open. Now, after this ritual, this lady is continuously following me. Anywhere and everywhere I'm going, she is following me continuously. After this, like then in the dream, I see that I go somewhere. It's a market kind of place in the same village, and there was some guy who was disturbing me. And this lady in my dream, she is not letting anybody come near to me. कोई भी पास आ रहा है उसको वो भगा दे रही है. तो अभी तक ये And सब now सपना में हो रहा है. ये सपने में हो रहा है. You'll get the real shock. So just hang. I know पनवेल आ सकता है, but still it's worth it. I'll tell you. डराओ मत. हाँ. Say now this lady, this guy is who's torturing me, like irritating me or disturbing me, whatever in the market. I'm just trying to ignore this lady. Suddenly she comes and she twists his head. So now the guy is dead. So his body fell in front of me. His back is toward me, but his head is also toward me. So she twists his entire neck. And now I see that body and I wake up in my dream. Like I wake up from my dream. Okay. पलट. And I see the time, it was around 1:30 or something. So I walk around the house, I drink some water, and then went back to sleep after half an hour. And as soon as I fall asleep, the dream starts from the same place, as if like somebody pushed a pause button, and when I fell asleep again, somebody played it again. So my dream started again from the same place. I'm standing and looking at that dead body. Then I start screaming. I run away, and then people around me, they start looking for a solution, like how to send that lady away. Same. Okay. Now they start looking for a solution how to send that lady away. Now few people find it, and this lady goes and kills them. And finally somebody find the solution. They gave it to me, and then a lot of things happened in between. I'm just omitting everything. Then I go back to the temple. I do that ritual and everything. And this lady is following me continuously. She's running behind me to stop me. But as soon as I enter the temple, she can't enter it again. Now I'm doing the same ritual, same kind of ritual, like हाथ पाँव मोड़े हैं परिक्रमा करके, and this lady is standing outside and she is yelling at me that what do you think that ऐसे भाग जाओगी, you can run away from me, I'll follow you wherever you are. She tells me that she's yelling continuously. And the ritual was over and everything. I come out, I'm happy and everything, and I wake up from my dream. And I wake up, and the first thing we do, like we look for the mobile, what's the time. I check, it's 3:15 in the morning. I check the time. I look towards my leg where I have the door to my bedroom, and the lady passes from my bedroom door towards the balcony in my real life. It's the same lady. Because बाहर से street light आई थी, पूरे घर की light off है. But I'm getting the street light. I could see the face. It's the same lady. She just crossed my bedroom door. She came from my friend's bedroom. She crossed my bedroom door and went to the balcony. I woke up.
I switched on the lights. I checked the entire house. There's no one. There was nobody in the house. So I stayed awake, put on some Gayatri Mantra, Hanuman Chalisa, and everything. I stayed awake for the night. Next day, entire day goes fine. I'm absolutely fine. Nothing happens in the entire day. It's a normal day and all. I did my work and everything. रात को जब सोने जाते हैं, I went to sleep and then started getting some weird dreams as if like somebody is waking me up. And then I literally started feeling like my body, somebody is waking me up. Somebody is moving me, shaking me, okay? And I started sweating and I wake up. And I wake up, and if you know, Bangalore doesn't have that much of heat. Okay, वहाँ का weather काफी normal होता है. तो उस weather में भी हमें पसीने आ रहे हैं. Fan भी on है, but हमें पसीने आ रहे हैं. And now I wake up, as soon as I open my eyes, the first thing you see towards your leg, right? However you are sleeping, first thing you open your eyes, you see towards your leg. I see towards my leg, toward the door, and this lady is standing in my door and looking at me. Same green sari, big red bindi, open hair, that green and red sari. She's staring. She's just staring, nothing else. And there's a very bad smell in the house. And she stands there for, I don't know, for minutes or for seconds, I don't know. But she stands there for some time. Then she walks towards the balcony and she vanishes. There's no one. After she goes, then after some time, when I can collect myself, I wake up, switch on the lights, check karte hain ghar mein, but there's no one. Now the third day also goes by fine, but from evening I started feeling something. So what I did, I switched on each and every light of the house. Bathroom ka, bedroom ka, hall ka, dono bedroom ke, kitchen ke, balcony ke, each and every lights of the house. And then I thought that I'll stay awake, but I fell asleep somehow. ऐसे भी light on रहता है तो नींद नहीं आती है हमें, but I fell asleep somehow. Now I'm sleeping and suddenly I felt a very foul smell. इतनी घटिया बदबू थी कि ऐसा लग रहा था कोई गटर के बाजू में बैठा दिया. Like it's so bad, it's so terrible. And I wake up from that bad smell, and I was turned towards my left and sleeping. Okay, so when I opened my eyes, I could see the wall, and I see there's no light in the house. I mean, all the lights are off. So I thought maybe there could be a power cut, and I turned toward my right to check what happened because I can get out of bed from my right. And the same lady, she's floating in the air, sleeping next to me, 2 feet away um, from the floor, and she's staring towards me. After that, I don't know how much time I was awake or होश में थे. क्या हुआ? I don't know anything. That's the part. After that, when I wake up, it was morning already. So and I had a very bad headache, very bad headache. So first thing I do, I call my mom and I tell her that these are the thing happening. So I usually don't tell my mom because I have been experiencing all these things from my childhood, so I have a lot of experiences. I usually don't get scared. That's why. Now this time I got really scared because it was very close to me, and I called my mom. So she calls my masi, and she has a guruji. So this guruji looks and he checks and he says somebody have done some kind of black magic to me and send somebody to disturb me because recently I had some good achievement in my life during that time. I have achieved something and the person is jealous and they did some of the stuff. So the last night also I saw the same lady. She was sitting in my bed, and while the time this Guruji was, he said that he'll perform some rituals and everything. The night I saw her sleeping, the after that night also I saw her the same way in my house. And then that was the last night I saw her. He did some rituals and all, and then everything was fine. After that, I have never seen her. Now the I'm just weird happy part to know is, that she's not showing up in your house anymore. yeah,
Now the weird part But is, there's more. I told you on the third night, I switched on all the lights, right, in the house. Huh. I told you that I have switched on each and every light of the house, and when I woke up, all the lights were off. So I thought there's a power cut. But when I wake up in the morning and I checked, all the switches were off. Not a single switch was on. Somebody put all the switches off. Yes, and I was staying alone in the house. There was no way that anybody could have an interest. There was no interlock in the house that my roommate could come in or something like that. मेरा That it घर was में मैं कितना बोलता हूँ लोगों को स्विच बंद करो, इलेक्ट्रिसिटी सेव करो, nobody listens to me. So वो maybe अलग बात there, है. चलो I think this electricity तो ghost बच was गया. saving powers for me. Oof. Correct. Saving electricity. देखो at least देखो headache के लिए क्रोसिन. हाँ हाँ. I think, but बाकी सब के लिए I don't know. काम Wow. नहीं किया ना, क्रोसिन लिया. I took 2 क्रोसिन, Saridon, Dolo. Nothing worked on my headache that day. But now it's stopped, na? No, it stopped No, that he's time talking the only. headache. Headache also stopped and the lady also Headache stopped. has stopped. So see, there's a correlation, headache and the lady. Maybe Yeah, you should I also think so. try seeing a doctor. But anyway, I want to tell you something that it was quite scary. Yeah, It very it scary. was scary. I- I have lot of experiences in this way. This was really scary. This was really scary My for even God. for me. But Now so I'll tell I'm you, talking about it. I'll give you a solution also in case this is something that I do nowadays. In fact, if I get too scared, is that Mhm. पंचमुखी हनुमान जी का फोटोग्राफ अपने पास रख लेना और at the corner of your door, हाउस का डोर में छोटा सा फोटोग्राफ ऊपर Hmm. चिपका देना on the door. Okay. Do you feel like maybe like because पंचमुखी हनुमान, you can Google it and read all about it. Yeah, sure. sorry. No, I was going to ask if do you feel like maybe you were dreaming, you thought you came out of the dream, but you're still in the dream. That's happened to me a couple of times. Yeah, Where you're but the that's dream not within a going to dream. happen for 4 nights, right, Jose? Yeah, ये yeah. तो सही है. I never said I know anything. I in fact know less than nothing. So thank you so I much. also thought that maybe I was dreaming. So if I feel something nowadays, I try to debunk it myself first. If I can't only, then I trust it. The headache is a key over here. Please take care of your health. Drink lots of water before going to sleep. Water. Thank you. Here, as far as my parents are concerned, you can heal even a broken leg with water. Just drink lots of water, you'll be fine the next day. My mom also says the same thing. Yeah. पानी नहीं पिया होगा तूने. Yeah, just put water all over yourself. Drink it also. Yeah. Sit inside a tub of water. Ria, thank you so much for chatting with us. Very creepy and unnerving. And best of luck. Where just the Thank you for happiest part letting is me कि in. अभी नहीं हो रहा है. समझ रही? हाँ, हम जी, लोग जी, that's the best जरूर. part. चलो. Thank you so Bye much. Ria. Take care. Thank you. Bye. Ria. Bye. Take care. Take care. You know that reminds me, Suresh, though, of Mhm. you know how sometimes you'll hear a sound in your house, like karkru. We talked about Yeah. this. Sometimes it's just the wood and things are sort of like just resting or whatever. They call it the metal fatigue. the Metal wood fatigue, furniture, yeah. Furniture There's a fatigue. word for so, it. yeah, But no. But sometimes you'll hear like a noise from the kitchen, correct. and then we go and then we do this thing of कौन है? कोई है क्या उधर? And I mean, there's nobody there, so you won't get a response. But what if you were to get a response? I remember Then what? So they did that in his house, and came and slapped him. Also realized he might say, "How dare you talk to me disrespectfully?" Very funny. It's so stupid. Oh, when you're God. alone, God, I hope you never get. Anyone should not, and nobody should go through this sort of a thing. You know? Noise of marbles falling. Anyway, if you've just tuned in, I'm really sorry. And there's no way to really explain what's happening over here. Maybe you can ask somebody else. They can tell you what's going on. Don't forget to hit like and subscribe on good channels. And if you could do that here also, nothing like it. 35 minutes left for this stream to end. I'm very sleepy. I'm not gonna lie. An NGL. NGL. Not good. I'm quite sleepy today, by the way. But मेरे को Elden Ring भी खेलने है. तो Sorry, I just उठो, want time. उठो. क्या खेलना है तेरे को? Don't do that. Nothing. कुछ नहीं. Stop playing now, ना. तूने 2 बार अपना मीटिंग कैंसिल कर दिया यार. तुम लोग रात को करते क्या मीटिंग? 12 तुम लोग क्या 4 रात को बैठ के तेरे को गेम खेलना है? बच्चा है क्या? गेम खेल रहा है जाके. Dada, please. No. Let me play now. 5 minutes. लगा के होमवर्क कर. You know what my daughter does? She's watching TV na. She'll quietly go to my wife and say, "Can I get 5 more minutes?" My wife will say, "Yeah," and then she forgets.
Like that ki 5 minute khatam. Then after the 5 minutes over, she'll come to me and say, "Dada, can I get 5 more minutes?" Quietly, I figured it out recently. Okay. Next person. Moving on. Moving on. To the next person. 34 minutes. If Cyril was here, this is the moment where uske andar wo sab fresh feeling aa jata. He'd be like, "Ay, only 34 minutes left. Main ready hai." We forgot. Yeah, I was trying to debunk it so I can sleep peacefully tonight. No, actually, this is why I stopped sleeping on you altogether. Kya fayda? You Because sleep, of you get a ghost- dream, you but think of ghosts. I'm- Chodo, nahi But chahiye. really, Jose, the sacrifice. I know that you started sleeping on time in recent times. I especially, did, and but then I messed it after- up again. Yeah, but I'll fix it. because Don't of ghost stories. I really Yeah. appreciate. Thank you, sir, Really- for. I'll remember that this is the story. मैं सबको बताएगा. Yeah. Karan Iyer, we're bringing you Everybody in. can. Hey, Jose. Hey, what's up? Hey, all good. Hey, Suresh. I'm really big fan. Like I've been watching all these ghost streams for such a long time. So, Thanks, man. yeah, it's really Suresh, nice to this be is here. Karan, not Ken. Huh? You I said it's- everybody can. Yeah, no, this is not Ken. This is Karan. He's Iyer, so I just spoke to him in Tamil. Everybody I know, Oh, yeah. my bad. No, I'm sorry. Yes. My dad's Tamil, Tamilian, but my mom's like Punjabi. So like kabhi, Oh it's यार like कोई बात नहीं यार तू कैसा है बता दे. He just हाँ, spoke in दोनों- Hindi. Suresh का when he said Punjabi, he's just like वो हिंदी को पंजाबी accent में बोल दिया. यार थोड़े वास्ते थोड़े ना पंजाबी बोल रहा था होजे प्राग थोड़े वास्ते थोड़ी ना बोल रहा था पंजाबी में. मर जाएगा सुरेश के साथ stream करके. Anyway, Karan, Karan. mahal, my kitchen, my bedroom. Karan, where are you from and where are you narrating the story from? Where is the story based? Okay, story is based in Pune. But I'm narrating the story from, I'm currently like I'm in the US right now, so in New York. But the story is it's my dad's story from Pune. I moved Wow. here like 4 years back, so I was in Pune too up until Okay. then. But Cool. सुनाइए भाई. all right. So the thing is, so let me just get right into it. My dad, when he was young, he went to St. Vincent's. I don't know if you know that school. It's a school in Pune. And so his science teacher had given him like a project where he was supposed to go to a garden. Like there was a garden close to his house called like Empress Garden. And so you're supposed to go to that garden and get some like samples of some like leaves or something, like different types of leaves or some project he was given. And so he went to this garden along with a couple of his friends, and he went there and they completed the project and they got all the I guess all the leaves that they had to get. And after doing that, he was there with two friends. The two friends told him that, okay, you know what, we're going to get going because it's getting dark. So it's getting dark and it was also really cloudy that day. So they're like, it seems like it's going to rain. And so they were like, we're going to get going. And my dad was like, okay, I'll just stay. I just want to check a few more things. So he was like, so they left and my dad was still there. And so right after they left, like it started to get really dark, and I think it was around like 6:30 or so. And right around that time, it started to rain really heavily. So so there was really heavy rain. And my dad, he was like, he was ready to go. So he quickly, it started to rain. So he got on his cycle and, he started to leave. And he had come to this place like so many times before. Like this garden was like around, I would say like 20 minutes away from his home. So he'd always cycle down here. But all of a sudden, I don't know on that day what happened, but he just forgot the direction. So he got on his cycle, but he forgot where he had to go. And so he started he left the park, and he was on a road. And so what he would do is like, he would be like, oh, I need to go this way, and he would like start riding his cycle in a certain direction. And then he would be like, no, it's my house is not this way. And he would turn around and he would go in the opposite direction. And so like he was really confused as to where he had to go. And when he was riding his cycle, he could feel like a really heavy weight like sitting behind him. Like, he didn't know what it was, but he was like, he said he felt something behind him. And right when he so while riding the cycle, he looked back a bit.
And when he looked back, he says he saw a lady with like a wearing like a red sari and who did not have legs, like sitting behind him. And he said he was terrified, but he just kept cycling, and he just kept cycling as fast as he could. And again, he would just like keep going in circles, and he didn't know where he had to go. And finally, like he did that for like an hour or so. And after that, when the rain finally stopped, he came to his senses, and he was like, oh, okay, this is where I have to go. And he left, and he went home. And as when he got home, he had a really high like temperature, like he was fever for like a long time, and like for like 3 4 days. And yeah, so that's what happened to my dad. And the funny thing is, like, just like 2 weeks after that, my grandfather, he went to that same place, like just to take a walk in the park. And again, the same thing happened. It started to rain really heavily, and he lost his sense of direction, and he just he just kept wandering like around the park. There was a well in the park, and he just kept going all like round and round the well. And so yeah, that was. And finally, again, when the rain stopped, he came to his senses, and he came back home. So it was like there's something in that park that I suppose caused this. But yeah, that's my short There's something story. in the well. There's something in the There is well. something. There is something in the well. So like, Or maybe somebody should have investigated, but you didn't have thought about it that time. Someone dropped Because- LSD in the well in the water supply. No, that could have been a spirit of somebody who's been dropped in the well or pushed in the well. yeah. And- So like, And my- also, my- one bad one joke I As wanted usually to crack. happens. A really bad one I wanted to crack was maybe when your dad looked behind, he saw a lady sitting behind without her legs, but actually was sitting with her legs folded on the cycle. Sides. अभी सुनो तभी तो they used to have big carriers, na? yes. पारिवारिक अपने माहौल है. जमाने का cycle, please. Very interesting. This is actually a trend. ये ghost पीछे बैठने का trend. Yeah, but Malish this का is not the original first time. story. I saw one on Instagram. I saw another story like this where the ghost ends up just. They know what scares people. उसके पीछे जाके मैं बैठेगा उधर. Balesh ko original story, na? Yeah. Anyway, Karan, thank you so much for sharing that with us. Very Thank you. creepy and unnerving. Thank you so much. All right. शुक्रिया. Thank you you. so much. Really All right. appreciate. क्या बात है. Thank you. और सुरेश जी कैसे हैं आप? बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? या मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ. आगे जाने से पहले I think I look like Amitabh Bachchan and Suryavanshi. See? if Amitabh Bachchan makes that same face, if you tell him to do that, then all right. क्या आप तैयार है सुरेश जी? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बताइए. क्योंकि मेरे घर के ऊपर तार, मेरे बिल्डिंग में है कार, मैं मेरा आया नाम हूँ है तेरे अक्षय घर पे कुमार. इन रिसेंट लेग, मेरे घर पे है थोड़ा सीमेंट, तेरे हाथ पे है पानी, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो. यहाँ पे नानी, चलो नाचते हैं प्लीज ये मिलकर. मत इनकरेज करो सुरेश जी. आप बहुत ही Not प्यारे one of the हो, boot. आप बहुत ही स्वीट हो. पहनते हैं हम ब्लैक बूट और यहाँ पे चल रहा है स्टोरीज ऑफ द बूट. कम ऑन ब्रो. सुरेश जी एक सेकंड. हाँ थोड़ा हैमस्टर की तरह. सॉरी. एलिशा गाडा, उन्होंने मैसेज भेजा था. एलिशा गाडा, ये बताइए. एक सेकंड. अरे ये फिल्टर बीच में आ रहा है, एक मिनट. एलिशा गाडा किधर है? और नाम हाँ दिख रहा है? ना एलिशा गाडा. अरे $9.99. लाइन वो फोटोशॉप से मैं वो पॉइंट में निकाल दूंगा. लेकिन somebody said I thought Faye D'Souza sent you a super chat. Actually looks like I thought वो इधर. कितना अच्छा जोक मारते हैं हमारा हरामी चैट. बहुत बढ़िया, बहुत बड़े बढ़िया. हरामी. मजा आता है. Harmeet wants to know what does your father-in-law is an awlaz means. Well, sir, it's not your father-in-law is an awlaz. It's your father-in-law's awlaz. Maybe so now we don't have to explain. Nuts. Awlaz not a nut, sir. I know, but smaller than a nut at times. Why do you keep doing that? I know what the size of the awlaz is. करने की जरूरत नहीं है. समझ रहे हैं? Anyway. ठीक है. मिलिंद थोड़ा भाग के चला गया. Yeah. तो okay, now this. मिलिंद समन आजकल सरप्राइजिंगली बहुत सारा न्यूज में आ गया है. Selling off, ripping off a car musty product. Anyway, that's a later topic. Anyway, before we get into that, so this super chat, I'm going to have to just. There'll be a bit of silence on the stream, but I'll go and check
and come back. Okay, this is a super chat that we received from SJ. SJ says, "Hi, Jose baby, meet me later." अरे that's fine, but super chat कितना दिया? Just wait. कभी नहीं देखते हैं सर. ₹1 भी हर बूंद आप समझ रहे? Anything helps. मैंने भी नहीं देखा. Hi, Jose baby, meet me later. Wink emoji, kissy emoji, tongue emoji, and lips ka emoji. Suresh, you'll give me 1 second. Yeah. I'll just go check with my wife. Okay. 1 second. Sure. ना? Nobody go anywhere. Please, 1 second. अभी आया मैं अभी. तो दोस्तों ये था हमारा गोस्ट स्ट्रीम और कुछ ही देर में हम बात करेंगे फिर से हमारे प्यारे दोस्त होजे के साथ. लेकिन तब तक के लिए आपको बताता हैं यहाँ कि द गोस्ट इज नॉट देयर. देयर इज नो गोस्ट. That's the Okay, thank you, we darling. apologize to our viewers for the little bit of violence that they could hear. So my wife said, yeah, no problem. जाओ आप. And she was very understanding strangely. I don't know. उसने कुछ बोला ही नहीं. We are not fooled, Jose. You are trying to make us think that तूने मेकअप लगा के आया, लेकिन सच्ची में मस्त पीटा तू. मैं क्या बताऊँ आपको. She's very understanding. उन्होंने I know. not a problem. तो SJ जी आप प्लीज अपना एड्रेस बताइए. मैं आ रहा हूँ. ओके ठीक है 1 सेकंड ना. हाँ. Suresh in the middle of somebody's story. मेरे को सिर्फ ये बोलने का है. बाप रे. I just want to say, Jose, प्लीज बंद I करो. to really बहुत ज्यादा भाई सब. ओह देखा कितना टफ है. हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन सब कौन करते हैं. This is from Zoom only, This is so they Zoom, I made know. this animated. Yeah, very interesting. मजा नहीं है. अच्छा है बट दे वेरी सर आपको लेवल्स. कैन यू इम्पर्सनेट अभिष मैथ्यू. यू कांट. हाँ आज मैं अभी राजेश का नाविक पहन गया. चलो 22 minutes left. Suresh silver fox to yellow fox. Yeah. ठीक है. What's that baby? Go sleep downstairs. All right, no problem. How sweet. Last time you slept downstairs, the watchman was complaining. I sleep downstairs every night. It's rare that I get to sleep upstairs. But though that's settled between you and watchman. मतलब साहब बहुत डंडा बोलता है, डंडा पकड़ के सोना चाहिए. हमको बहुत गंदा. रात को फोन करके डंडा बात करता रहता है. Oh God. Magellan बोल रहे. सुरेश जी, how does a Saif Ali Khan cat sound like? Wow, hey, this is Suresh. Wow, this is that's nice. Meow. 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 Why is the cat driving a car? Meow, please. Okay, just do normal cat sounds. Yeah, Saif Ali Khan cat. Meow. Meow. Why is he doing It's Formula very 1 good. song? Meow. Meow. Okay, Yashasvi. Meow. Yashvi. Meow. Sorry. Hey, but it all sounds like some word actually when You celebrity sound like cat you're in a impers- car, you psychopath. No, celebrity cat. Hello. Hello. Yashvi ji. That's what people have to hear in their houses, Suresh, when you make these sounds. And the neighbors wondering what the hell is going on. ये लोग Formula 1 देख रहे हैं. Yashvi, good evening. क्या खा रहे हैं आप? मैं पिज्जा खा रही हूँ but it's gone now. I'm so happy आपने मुझे ले लिया. मैं बहुत टाइम से Welcome. सोच रही थी कि मेरे पास भी कोई स्टोरी हो, मेरे पास भी कोई स्टोरी, and finally है ना? something happened with me 2 weeks ago. Okay. I'm just gonna quickly tell my boyfriend that I've got in because he didn't believe me. Oh, I'm also married. A baby. Oh, What? sorry. So we have been living in this property for 3 months now, and before us यहाँ पर जो लोग रहते थे, they used to live here for like 5 to 6 years, and they suddenly like left, and it was not like too inexpensive as well for like the standards we live
in this, like we live just outside London, so it wasn't too expensive. But yeah, I mean, it's a good property and we don't have to pay a lot of taxes here. So we were like, yeah, it's a good place, we'll live here. So nothing happened for like the first 2 months, but recently my boyfriend, he went to visit his family for a week. So I was alone in the house for, I think, like most of the week. So basically, और मुझे जल्दी डर नहीं लगता. I'm like, I'm the kind of person who thinks ठीक है, there are spirits around there and they like live and blah blah blah, जो भी. But like I was on my phone one night and it was, I think, 2:30 a.m. and I was like, अब मुझे सो जाना चाहिए. तो मैंने lights off करी और to like keep the heating inside, हम सारे दरवाजे अपने घर के बंद कर देते हैं. So I locked my bedroom door and I was like, on my phone, I'm like, I shut off the light and I'm just going to sleep. And as soon as I close my eyes, I hear a very loud scream of woman. And I was like, fuck. In your own I house? hear it. या बाहर से? No, it's not in my house, but I can hear it. So there is a complex above us and there is also a complex in front of us. So like in an apartment complex, तो हो सकता है सामने से आ रही हो या ऊपर से आ रही हो, but इतनी जोर से चिल्लाने की आवाज आई और फिर मुझे एकदम से जोर से bang ऐसे सुनाई दिया. And I was like, okay, this is a bit suspicious. But then the woman screamed again and I heard a very loud bang again. And then I heard crosstalk between two people and the woman was still screaming. And this went on for like 45-ish seconds. And I got like, so after like 30-second mark, the woman was screaming so much, I got tense and I got also nervous. So I called the police and I was like, this is happening. And they were like, thank you so much for calling us. And they told me कि उनको एक और रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले उसी घर से आई है, उसी आपके एड्रेस के पास से ही आई है. तो this was still fine. I was a bit spooked कि क्या हो रहा है, and like आप दूसरी कंट्री में हो और आपको एकदम से कुछ ऐसे चिल्लाने की आवाज आया, and like मुझे ऐसे हुआ कि क्या हुआ, but I was like चलो ठीक है. I did good and then I like asleep. I was trying to sleep, but मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मुझसे हुआ नहीं. तो I basically was like, I've called the police, they might be coming. तो मैं बाहर आके अपने कॉरिडोर से अपने रूम से चेक कर लेती. So I opened the door, I stepped outside and I went to check, but the police was not there. And then I was like, चलो बहुत रात हो गई है, I will go back to my room. And I turned and like my house, हमारा ऐसे लंबा सा कॉरिडोर है, and outside the light has sensors in it. And normally you can hear people walking, right? I couldn't hear anybody, but वो light बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है, चालू हो रही है. And insects can't trigger it. Only like a human up to a like certain height can trigger it. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, but वो बंद हो रही है, चालू हो रही है. And I'm like, fuck. मैं इस टाइम पे बहुत डरी हुई हूँ कि क्या हो रहा है, like maybe there's a killer coming for me. So I go back to my bed and I'm in my bed, I'm on my phone, I'm texting my boyfriend this happened, and suddenly I hear my door open. और इतना open, सिर्फ इतना open जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो. Shit. And I was like, fuck. But मैं इतना ज्यादा डर गई, मेरे फोन में 6% बैटरी थी और मेरा चार्जर बाहर था. And I was like, क्या करूँ मैं. But it was very scary. And then my boyfriend later told me that he also, like a couple of weeks ago, he also heard the door opening and closing. And that can be coincidental. Like हो सकता है कि दरवाजे में कुछ हो. But at that moment, I was like, fuck. So what we think is something must have happened with like the past owners, and that's why they left in like such a hurry, and we got this place, and jo bhi hai. But it was very scary. So the lady And screaming, the cops came there. So I don't know if the cops came or not, because they told me on the phone, thank you for calling, and they will like
they also got a similar call at the same time from the place. So I was like, yeah, I mean, I'm not imagining things. But usi ke baad, like, the door opened and I was like, fuck. And I could see the like outside sensor going on and off, but I couldn't hear anybody. And normally you can hear people. And or recently we also like, so our door is like this. Can I quickly show you? So our door handles are like Apartment this. too, okay. Oh, so you see that going up and down then. Yeah, I saw this going down Oh, and up, and I could see like बस वो थोड़ा सा ही खुला है जैसे कोई अंदर झांक रहा हो. And we also like have like scratches on the door which we didn't notice. अभी recently हमने बाहर? notice किए. नहीं अंदर जो अंदर से, bedroom पर. Because I was So- going to say, I saw a video on Instagram of a cat knocking on the door. God. Sorry. I know. But, But like yeah, man, that's damn freaky. So first thing that When are you comes to mind shifting? is that electrical issues in the building, or maybe there's somebody who has a key, like a landlord or someone who's checking on people. वो आपका वॉचमैन के पास तो नहीं होगा? Or he's a perv, unfortunate. But what? no we don't have like, it's not that kind of apartment complex. Freaky. हमारा what वॉचमैन नहीं होता लंदन में? होता है but our apartment complex is like an open plan. तो But यहाँ कैसा पर जाएगा सुरेश यहाँ से वहां तक वॉचमैन? अरे वहाँ का वॉचमैन लोगों के पास अच्छा चाबी वहां भी का ही होती है, वॉचमैन. अच्छा वहाँ का वॉचमैन, यहाँ का नहीं बाबा. अंडरस्टूड. तो anyway, Yashvi, thanks for sharing this super freaky story with us. But now, current situation. well we don't know. अभी कोई थोड़ा टाइम पहले आया था चेक करने is everything okay in the apartment, and we told them that, and he was like laughing कि हो सकता है वो ये haunted हो या कुछ हो गया So हो. look, And then he if this is happening now, I have a suggestion. Do you have a boyfriend by any chance? Yes. Yeah. he's Oh, there. yeah. Oh, I missed that. So if you have a boyfriend, what you do is you take the bed na, uska bed, and put it next to the door over there. Make him sleep next to the the door. कोई So it खोल will देगा तो टक ऐसा वो. They won't be able to come in at least. I mean, I'm just yeah saying, if they're I human. changed like out of the house after that कि Oh, okay. अगर ऐसा कुछ like I'm like ready and prepared कि कुछ हो तो I'm like yeah, if there's an actual person there I can do it. I will kill the person. Or Freaky. I started karate classes as well. I'm like, I will not tolerate this. Ghosts aren't real. They can't hurt me. Yeah. Suresh also says the same thing. Na? If Yeah, you feel some but I would drops like and to all, it's meet a them. ghost peeing in the air or something. But zyadatar they can't touch you or harm you or anything apparently. So according to Suresh. And so far we've not met any. Anyway, thank you so much, Yashvi. Be Thanks for safe. being on the stream with us. And Thank you so much. have a good one. Be safe, Baba. And bye. 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 Very freaky story, huh, Suresh? बाप रे. And nothing to do with ghosts, just even this happening at all. Yeah, it Very was like, freaky. also I think multiple, oh God, just imagine. Or maybe it's a building ka test, So the the society, what do you call the chairman? Building secretary. Secretary. Building secretary and some other authorities in the building. I said, we'll check how responsive people are. तो वो लोग चिल्ला रहे नीचे से dang dung. Then they said, ma'am, हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं, आप नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? Oh, Stuff like that. that door opening Thank you in so the middle is much. freaky, man. Freaky. But best thing is to also keep a torch with you handy. Some ये mobile people put bells on the door का handle ना. तो अगर Yeah, कोई खोल देता है वो ट्रिंग. Clink, Maybe even scarier than not Yeah, having because bells. then the problem is, suppose you put those bells, if they're really heavy bell, ठीक है. Light वाला bell वाले fan की वजह से yeah, have air draft from the AC will also cause it to. You stress Tick, tick, yourself tick. even more because of Yeah. that. Oh man. Ma'am didn't come. Another message. 1 minute, huh? Got another message, Suresh. Yeah. It's SJ says, you look even more sexier now. See you soon, baby. Huh? Who? You're getting messages. इधर वो message आया है. हाँ क्या हुआ baby? You're going back again, so I'll continue हाँ? my personal. Yeah. कुछ नहीं. आजा रे तेरा दिल 10 minutes left, पुकारे. Suresh. Are you ready? This is the point where the stream just goes out of pocket. And we have no idea what's happening. Yeah, but we missed 11, is it? Yeah. आज we become we're slacking off like anything. Yeah, seriously, आज बन seriously दोनों में नींद में.
सुरेश जी कैसी ABCDFG सुरेश जी ला 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 ना 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 ना. Hey, that's nice. Yeah, the guy is singing positive tones. The girl is singing like negative tones. So you do positively. Nah. Nice. No, thank you. ये बंद कर. I apologize if you just tuned in. There's no way to explain. English Carnatic classical. You hit the nail on the head. Hoezaay. Like I was saying, if you just tuned in and I have no idea what's happening, neither do I. Don't forget to hit like and subscribe. क्या किसका मैडम बोल रहा है? 9 मिनट बाकी. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़े? आगे बढ़े बढ़े कि नहीं सर? ठीक है. बढ़ो बढ़ो बढ़ जाइए बढ़ जाएगा. All right. Next caller coming in. So today, thankfully, not many people are saying that I'm missing Cyril and all that stuff. And Cyril, if you're watching, Thankfully, बेचारा वो बहुत बड़ा हीरा है. देखो सबसे बड़ा हीरा तो सबको पता है कौन है. उधर है वो. Cyril. नहीं उधर है उधर. बहुत बड़ा सब यही है वो आदमी. अरे गया. We lost caller. अभिषेक हालवा चला गया. Can I tell you something, Suresh? In the starting of the stream, I was like, वो नहीं इसमें वो मजा नहीं आ रहा है. वो वाला फीलिंग आ रहा था. But मेरे को आज बहुत मजा आया. I turned out so well. Can I be honest? I want to be honest with people who. Yes, please. Okay, then no, but. Oh my gosh, how long is this going to affect you, sir? You should see a doctor about that. Doc has missed my super chat. Never. कैसी बात कर Gone रहे हैं? right into his bank. Doc से हरामी साला. मैं हर रुपये का हिसाब देता हूँ तेरे को. ऐसा जोक्स तुम मारता है फिर लोग मेरे को गाली देते हैं. You know, DMs. Anyway, छोड़ो. Now I was saying in the starting of the stream, can I tell you, there was nobody in our waiting room. I was like, अरे बंद करते हैं stream. नहीं करते आज. Correct. I failed at life. But you know, many people are having a tough time, sir. You know how tough it is on social media. Likes, Absolutely. comments. हमारा पूरा जिंदगी इसी में व्यस्त. क्या मिलता है सब चीज? कुछ नहीं मिलता है. क्या आप अचार बनाओगे आप? अपने बिल्कुल सही कहा. कुछ नहीं मिलता आजकल जिंदगी में बस. नहीं मैं बोल रहा हूँ कोई मिलता है. ज्यादा लाइक सब्सक्राइबर से पैसा मिलता है सर. बट फिलोसॉफिकली स्पीकिंग क्या मिलता है? पैसा मिलता है. Yeah, no, philosophy. छोड़ो. This is a failed discussion. 7 मिनट बाकी. तो guy, basically I'm saying you don't give up. अगर दूसरा काम है जो इम्पोर्टेंट है, मतलब गीजर, गैस वगैरह, then give up. Don't put. छोड़ो. I thought I had something there. आगे बढ़ते हैं. Basically, I'm close to giving up. No. Basically, you should be like the geyser. You should switch on, you become hot. When you off the switch, you become cold. क्या बात है. That's how it should be. Anime says internet opinions are really hard to maintain. What a fantastic line that is. SM CEO Sayali. I think they were having some kind of offsite. और वहाँ पे Zoom calls कर रहे थे. So सबका. Suresh Menon, care of Sayali. Suresh, someone's asking you to wipe your camera. Will it get better if you wipe it? Why? It's a very good camera. What is wrong with you? Is it blurring? No. That's just your radiance, sir. That's going through. सब लोग देख के बोले आए क्या बात. What is this message? सायल जी जब तक आ जाते हैं आप. इनके है 4 दिन बाकी है बेकार दिन. चलो I wanted to. Oh, hello madam. Hi. Hi. आपकी आँखों में कुछ वो सयाली. एक मिनट. सयाली ने पता है मेरे को क्या दिख रहा है इधर मैसेज. उसने लिखा भक्त BSDK. उनका वो प्राइवेट मैसेज भेज रहा था अपना फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में. How nice. ऑलरेडी मेरे लोग मेरे से ऐसी बात करते घर पे. आप भी सयाली जी. आई एम श्योर इट इज नॉट सयाली. एनीवे प्लीज रिमाइंड मी
Why don't you just block these people, ना? नहीं, ये शायद वो वही इंसान है जिसने अपना पिछवाड़ा दिखाया था पहला एपिसोड में गोस्ट स्टोरीज। नहीं, मेरा हमें But फिल्टर बंद नहीं किया। guys, what this person is अपने family के बारे में पूरा बता दिया है। ए रिलैक्स सुरेश तो पूरा ऑफेंसिव पे जाता है। Offensive? मैं बोल रहा था Did जोक you एक offensive word था? I just said उसका so nice. फैमिली बक छोड़ ना, मजा कर लेने दो ना भाई। BSD के भाई मजा लेने दूं। चैनी तो मुझे भी मजा लेने दो ना। नमस्ते बाप आपके रे, my पिताश्री, relationship getting आपके stronger with this person, Suresh. SJ says, come home to me in your little black dress, please. ठीक है. Now, after I wore I it, know it's not so SJ little. SJ has to be Cyril, I think. It must be Cyril, God knows. Dipti P says, much love to you guys. इतना पैसा मत करो. ठीक है. Doc says, miss my super chat. Never. ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट कॉलर यश आ रहा है। सयाली जी को याद रखना, उधर वो उनका अकाउंट, नहीं तो वो वापस आ जाएगा, अपना पिछवाड़ा दिखाएगा, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे आप सुरेश जी? नाइस, बट फैमिली का अच्छा इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने अपने। स्टॉप इट, बार उनकी फैमिली के बारे में क्यों जितने बार जो भी है पर्सन BHAK BSD के जो टाइप करके गया, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस टू योर फैमिली। स्टॉप इट। क्या आदमी है रे तुम सुरेश? अरे गलत बटन गया, वो भी गया। कौन? यश। अच्छा, यश अभी तक आए नहीं, गया छोड़ो, आए नहीं। मैं बोर्गिर नहीं खाया, मैं पोई खाया। पोई, गोवा का पोई बोलते हैं। My mom goes to Goa. फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, SMCO सयाली का फैमिली का नाम है BSD के। Stop. It's probably not even. These are fake names, Suresh. Why? That's fine, but whoever is Psycho. so whoever has wrote that to us, they'll know that what will get to them. So they are trying to deal. So again, once again, सयाली CO SM जो भी है BHAK Just BSD stop. के। Suresh, but you know what? I'm a strong believer in karma. Yes. Whatever you do in the world comes back to you 4 times, except investments. Thank you. I'll be here till Friday. Long term investment करो, हो जाएगा ठीक। शाहरुख सिद्दीकी। I'm not offended. I'm just very happy that Sayali CO CM decided to tell her family BSD के। मार डालेगा तेरे को सब। Asked to unmute. All right. For a second, I thought Sunil Grover, bro. Yeah, man. Grover जी कैसे हैं आप? Hi sir. Hi, Sir, very Shahrukh. well after sir. बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया है। Sir, I've been a very big fan since Khan Masti. Oh Even dear. I listen to all your Khan Masti episodes even now when I'm traveling in the bus or going anywhere. पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए किसी को। पब्लिक को और अवेयर करना चाहिए कान मस्ती के बारे में। I know a lot of my नहीं। friends talk about it when I've changed their life. I'm not sure for better or worse. अंडरग्राउंड मूवमेंट रखो उसको। In fact, I'm very happy that even Milind Soman कान मस्ती बहुत सुनता है। आजकल ऐसे ही प्रोडक्ट्स भी endorse कर रहे हो। All right. शाहरुख सिद्दीकी, take it away. कहाँ से बोल रहे हैं आप? So currently I'm in Canada. Oh, nice. But वैसे I'm from Delhi. ठीक है। So I've just moved in. अभी 1 महीना पहले वेदर आया हूँ सेम तो है दोनों जगह में। हाँ। दिल्ली और कनाडा में। वेदर सेम तो नहीं बट हाँ ऑलमोस्ट। ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है। Wow, snow. All right. Oh, Yeah. wow. So Let it's it minus, snow, let it snow, let it snow. like it's minus 27, 26 for past 2-3 days. Oh man. Don't touch the yellow snow. Huh? It's a Which part of Canada are you from? Vancouver or? So I think without wasting any Good. much You time, didn't answer I will that. start. क्या पूछ रहा है? क्या information? अरे, I want to go to such a place यार जहाँ पे snow He's ऐसे like, गिरा I हुआ। just tell you the story now. Vancouver या टोरंटो यार, शाहरुख को तो बता दे। So अरे नहीं बता I ignored you क्या again. बोला आपने? थोड़ा मैंने सुना नहीं। I'm so नहीं sorry. what we नहीं, were नहीं। talking about is, see, again I'll say it. Vancouver, घाट के ऊपर. नहीं, There is something going on. No, I just want to know where he's talking because I really love snow and I just enjoyed So watching I'm that. in Toronto at the moment, sir. Thank you, Shahrukh. That's it. Thank you. ठीक है ना? So I'll start with the story. If Please, that's okay. Yes, please. please. Yeah. So this is about my ex-girlfriend और ये उसके
ex boyfriend के बारे में, like before me she was dating this guy, and this was while they were still in school. So his name is Asim. और मतलब ये लोग एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे, तो इतना अच्छा जानते थे कि इवन देयर फैमिलीज यूज्ड टू विजिट ईच अदर फॉर लंच एंड डिनर, सो ऐसे एक दूसरे के घर जाते थे. सो वन डे व्हेन आसिम्स पेरेंट वर एट हर प्लेस, तो ऐसे बात करते करते जैसे उसके डैड ने ऐसे ही बोला कि यार देखो, ये तो सही से पढ़ती है बट आसिम सही से पढ़ता नहीं है, इसका पता नहीं क्या होगा. ऐसी जोकिंगली ही सेड दैट. And अब पता नहीं आसिम को क्या हुआ, he got very offended about this. And when they were driving back home, and this was at the time when he was still in the 10th standard, 9th or 10th standard I think, very young kid. तो गाड़ी में पीछे बैठा है और बोलता है कि डैड आपने ऐसे बोला, मेरे को ना पसंद नहीं आया. तो उसके डैड ने बोला यार मैं तो ऐसे मजाक में बोला था, इट्स नथिंग लाइक कि मेरे को तेरे से कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, ये वो ऐसे ही बोला. तो बोलता नहीं मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं आया, आपने ऐसे बोला. और ही ग्रैब्ड हिज डैड फ्रॉम बिहाइंड गाड़ी में से. एंड नाउ he was still in ninth standard, but the amount of power he generated, that his father and his mother could not take his hand off the neck. इतना tightly he grabbed him. So they got very scared and obviously concerned. तो गाड़ी साइड में रोक के he got out of the car, his dad, and he locked him inside. So he called Rimshah's father and said कि यार आप यहाँ पे एक बार आइए, देखिए आसिम is getting very aggressive in the car and everything. तो when Rimshah's father went there, he saw him in the car, Asim, और बोलते यार for some reason he does not look like Asim. His facial features have changed and it does not look like कि अंदर आसिम बैठा हुआ है गाड़ी में. And like they got very scared of this. तो उन्होंने बोला देख, I'm not sure if you believe in this or not. तो सॉरी, पहले फिर उसके आसिम के डैड ने उसको बोला कि यार देख ऐसा है कि ऐसा ना थोड़े दिनों से हो रहा है कि ही गेट्स वेरी अग्रेसिव एंड ऐसे अपना टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर जाता है, एंड ही स्टार्ट्स थ्रोइंग स्टफ इन द हाउस, एंड आई एम वेरी कंसर्न अबाउट हिम. आई हैव मेट अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, बट उन्होंने बोला कि कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है. सो एनीवे, सो रिमशास फादर वाज लाइक कि एक काम कर, आई नो दिस, एक बाबा को जानता हूँ मैं. आई एम नॉट श्योर इफ यू बिलीव इन ऑल दिस, बट एक बार उनके पास जाके देख एंड सी कि अगर कुछ ऐसी चीज तो नहीं है, कुछ सुपर नेचुरल तो नहीं है विच इज कंट्रोलिंग हिम. तो वो एक बाबा को विजिट किया. सो दिस वाज ऑल हैपनिंग इन भोपाल. तो भोपाल में वो एक बाबा के पास गए, उनसे मिले. तो वहां पर जब वो बाबा से मिले तो उसने बोला कि ठीक है, आप है ना हर फ्राइडे इसको मेरे पास लाया करो, मैं हर फ्राइडे इससे मिलूंगा एंड आई विल सी कि क्या प्रॉब्लम है. सो एवरी फ्राइडे दे यूज्ड टू टेक आसिम टू दैट बाबा. और हर थर्सडे को वो घर पे कुछ पंगा करता था कि मुझे कल नहीं जाना. कभी सामान तोड़ रहा है, कभी लड़ रहा है, झगड़ रहा है. ही यूज्ड टू गेट वेरी अग्रेसिव अगेन. एंड एवरी थर्सडे ही यूज्ड टू डू दिस कि मुझे क्यों लेके जा रहे हो जबरदस्ती, मेरे को नहीं जाना वहां पे एंड एवरीथिंग. सो दिस कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू वीक्स. नाउ आसिम के एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, सो ही वाज टॉकिंग टू रिमशा ओवर वीडियो कॉल द प्रीवियस अ डे बिफोर द एग्जाम, शाम में. एंड ही वाज क्राइंग ऑन द वीडियो कॉल. तो बोलता है यार मेरे को रिमशा बिल्कुल पसंद नहीं आता, मेरे को ऐसे लेके जाते रहते हैं घर वाले, ये वो. तो उसने बोला कुछ नहीं होता यार, डोंट बी सैड, कोई नहीं, ऐसे ही बस चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है. तो ही वाज क्राइंग एंड ही वाज लाइक यार मेरा गिटार बजाने का मन कर रहा है. तो रिमशा ने बोला ठीक है. पीछे गिटार रखा था उसके रूम में. उसने बोला कि ठीक है, इफ यू वांट यू कैन प्ले द गिटार. और आसिम को गिटार बजाना नहीं आता था. ही पिक्ड अप द गिटार और उसने एकदम परफेक्ट गिटार बजाया, एकदम परफेक्ट, एक पूरा का पूरा. तो रिमशा वाज लाइक कि अरे आसिम, तुमने गिटार कब सीखा. सो ही स्टॉप्ड क्राइंग ऑन द वीडियो कॉल एंड लुक्ड इन द कैमरा एंड सेड लेकिन मैं आसिम थोड़ी ना हूं. एंड शी गॉट सो स्केयर्ड ऑफ दिस. तो उसने बोला मतलब, एंड ही अगेन सेड कि मैं आसिम नहीं हूँ. एंड शी कट द कॉल. शी गॉट सो स्केयर्ड, शी कट द कॉल. शी वेंट टू हर फादर एंड सेड कि मैं ऐसे ऐसे बात कर रही थी एंड ऐसे उसने बोला. हिज फादर ट्राइड कॉलिंग आसिम्स डैड. ही डिड नॉट आंसर द कॉल. बट नेक्स्ट डे व्हेन ही गॉट इन टच विद हिज डैड, तो उसके डैड ने बोला कि रात को वो हमारे रूम में आया और मैं उसको अपने डैड को उठाया रात को जब सो रहे थे और बोलता कि उठो, मेरे को बात करनी है. तो उन्होंने बोला क्या हुआ. तो बोलता कि देखो मैं आसिम नहीं हूँ. मैं आपके घर में पिछले 2 साल से रह रहा हूँ आसिम की बॉडी में. अभी 2 साल पहले जब ये अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कहीं पे गया था, सो आई थिंक ही पीड एट अ प्लेस, एट अ ट्री और समथिंग, एंड दिस स्पिरिट वाज अराउंड दैट ट्री एंड डिड नॉट लाइक व्हाट हैड हैपेंड. तो उसने बोला कि ये जो हर फ्राइडे का तुमने ड्रामा कर रखा है तांत्रिक के पास जाने का, अगर ये कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारे बेटे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा
So it's better you stop trying all this, and that's how it went. So eventually, they continued taking him to the this priest and everything, and eventually he did recover from all this. But yeah, that was He's fine now, something na? that he's fine now. So he That's awesome. maybe a year later he got better and everything was fine. But yeah, this is what Wow. happened. Whew. Wow. Very freaky and unnerving banger story log bol rahe idhar. Sir, thank you so much for sharing that with us. So thank you so much for having me on the chat. Thank you, I buddy. have a few friends who've already come on the chat. I'm not sure. Oh, I'm so I'm pretty sorry. sure you won't be remembering क्योंकि No. नहीं, जैसे सुरेश सर, I think आदित्य करके एक लड़का आपको जो Oh, you know दिल्ली में Suresh? ओबरॉय या ट्राइडेंट में मिला था. Yes, I know. Trident. Yes, So you. I used to work at Oberoi when I was in Delhi. Okay. So he's a very Okay. good friend of mine. Then there's another friend of mine, Farah Ahmed, who has appeared on the call like twice or thrice. I'm pretty sure you won't be remembering. आप तो इतने सारे लोग, बड़े लोग हो, आपके पास तो इतने लोग आते हैं. अरे ऐसी So, कोई बात नहीं, memory loss है. but yeah, today finally I have this thing to flex कि मैं भी आ गया हूँ. Thank you, buddy. So Thank I'm you, one of Farooq. them. Very, Great very, story. very interesting story. This was the Thank you, sir. best. Thank you so much. Love you, Have a buddy. good day. Bye. Okay. Bye bye. Bye. Bye bye. Like when you're saying बाप रे. bye, bye 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 bye. आपका चप्पल है? Bye 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 bye. मैं bye. तो आपका डर गई. फोन? मैं तो डर गई. Seriously. बड़ा मजेदार स्ट्रीम था आज. But- Yes, somebody saying yes. होजे का जोक इग्नोर हो गया. एक दो जन को समझ में आया. उनको लगा आसिम awesome मेरा जोक तो ठीक है. आए मैं उसके साथ लेके जाऊँ. सुरेश सर. Oh, नहीं, thank you and thank सुरेश you सर. so much. तुम ही और हो. आप लोग, I know, नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ. Thank you, सायली जी, वापस अपना फैमिली बताने के लिए. BSD के very nice, we are so honored. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कौन ऐसा अपना फैमिली का नाम देता है? Fuck BSD के. So nice of you. Suresh, we'll remember this tomorrow afternoon. He'll be muttering under his breath. Salary use my family BSDK. Ding, ding, ding. All right. Before we go, sir, you know. Oh man, Oh, इसको you went. ठीक करना पड़ेगा. Hi, knock knock. I can knock knock jokes like this. Hey, listen, Pratmender Kumar, हाँ, please read out his says. Yeah, मैं आया हूँ यहाँ पे मेरे घर के ऊपर तार. मैं हूँ अक्षय कुमार. Hang out in the bar. Opposite of love is war. Nis कॉमेडी का पीस बोलता है. If you ask me Thursday, scam stream Friday, ghost stream Saturday, love stream Sunday, कान मस्ती सुरेश सर, हार्ट एंचुलर. हम लोग बाथरूम कब अच्छा. जाएंगे निस? हाँ, दिन भर स्ट्रीम्स. ये हम ठीक से नहीं कर पाते. आप तो पागल हो गए हो. और काफी अच्छे से नाचते आप सुरेश. गिव मी अ बीट. मैं हूँ अक्षय कुमार. बीए अपने बीए किया है. मैंने बीएससी किया. एनीवे प्रथमेश BSD के क्या? क्या? वेल सर ये अच्छा था आपका. बहुत अच्छा था. Thank you. प्रथमेश कुमार तुम्हारे घर के ऊपर तार. डू यू नो अक्षय कुमार? ऑलराइट. राजीव सिरिल कहा गया. करेक्ट, खा गया. वो कहा गया. वो देखा बोल रहे सिरिल सर शायद अगले हफ्ते आ जाएगा. एंड हो गया आज का स्ट्रीम इधर ही खत्म. और मैं बोलना चाहता हूँ कि सुरेश जी, Yes, madam. मुंबई की ठंडी खत्म हो गई है. तो इसीलिए मैं ये बर्फ डाला हूँ यहाँ पे क्योंकि ठंडी क्या कम बात हो गई है. तो मैं क्या कुछ बोलने आई थी, मैं भूल गई. तो मैं जा रही हूँ. बाय. लीव माय बॉडी. अरे somebody, अरे हाय मैं हूँ. एक और बार मैं होजी को उल्लू बनाया. बाय. Told you, man. What I'm gonna get myself checked. I just thought that you continue doing this. I'll see you all tomorrow. But before going, Sally's Okay. family. जाने से पहले thank you everyone. BSDK. Yes, especially BSDK, Suresh BSDK, Harami chat, truly Harami, take this stream to another level. ये stream कचरा है, मैं बता रहा हूँ. But when you watch it with the with the chat, it's a different stream only altogether. I don't condone the actions of the chat. मैं support नहीं करता हूँ, but मैं हंसता हूँ उनके वो जो jokes मारते लोग. तो ठीक है. Ladies and gentlemen, put your hands together and clap for the And one, pray. the only. It's Suresh
Suresh Menon. Viscosity, consistency, Thank you. And promiscuity. also put your hands together for the man who made all this possible. Correct. Hoezaay Komako. My. किसी को काम करना है घर पे, क्या कर रहा है? और देवी सुल्तान आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप यहीं पर हमारा प्रोग्राम खत्म होता है और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। लेकिन आप भूलिएगा नहीं कि हो जाएगा चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सुरेश doing it like an MC. I love it. Damn good. और दोस्तों गाड़ी नंबर 302 जिसने पार्क किया एंट्रेंस प्ले। और याद रखना, अगर किसी ने सैली का फैमिली को देखा तो BSDK के नाम से जाते हैं, उनको प्लीज इतला कर देना कि सैली ठीक है, दवाई ले रही है, ले रहा है। Don't forget to go over to Cyril's Instagram, Suresh's Instagram for sure. Give him some love, give him some double taps, tap that double twice, thrice. And yeah. If you're here on the stream and you had some fun, don't forget to hit like, subscribe on the best channels that you see. Mostly those are like, animal channels and Nat Geo, but also here, if possible. Just thought I'd slip that in there. Suresh Menon, always a pleasure. Thank you, making sir. us laugh, making us feel strange, making us wonder. I don't have anything. I thought I had some That's enough, and that's all we have for tonight, ladies and gentlemen. Good night, Shabba Khair, Anupam Khair. I'm waiting, sir. मेरा outro कब होगा? Yes, but BSDK. Thank you, sir. That's what I was waiting for. I thought he'd say Hoezaay Komako. क्या बात है? He just said Buck BSDK. Let's end the stream there. Thank you, everyone. Good night. Of course, there's a post-credit scene, Suresh. Oh, multiverse. I mean, I watched Wakanda Forever. They had a post-credit scene. तो इधर भी होना चाहिए. Suresh, do you think for the next week now we'll tell Cyril को Thursday को हो रहा है, and for 1 hour we'll pretend we're doing a stream with him. Then we'll tell him उसके बाद कि नहीं था stream. नहीं काज कर रहे हैं। That's mean. ऐसा नहीं करना चाहिए. नहीं correct. Live होगा तो ही अच्छा है। फिर he will come to know Sally's family, BSDK. But something you were saying, you don't want Cyril on the stream anymore. बंद किया मैं I stream. would never say We're not that. live anymore. Cyril see basically is not पका रहे हैं। contributing much. पका रहे हैं मतलब वो क्या मतलब बाल बढ़ा के all the everyone is Showing asking everyone for his him. muscles and all. Yeah, हमारा yeah. क्या? हमारा Good क्या? looking. We can't show our muscles. Yeah, I mean, I don't dare have to them. show I also. don't want to show. Wait, we're still live, huh? क्या acting? Oh, we are live. What? अच्छा लगा मेरा Actually, I was saying Cyril बहुत अच्छा आदमी है. Sweet guy, sweet guy. Sweet guy, very really sweet guy. चलो, लेकिन चलो, बस. चलो bye. This is the BSDK post-credit scene. Shubham I is saying, think चलो. I think Cyril ने डाला रहेगा भाग BSDK. Listen, I'm going to end this stream with something that's always in my head, yeah, but I don't want to say it because I love the Black Panther movie. I love that Black film, and I Panther. love what they did with it. No, but Wakanda forever. every time they say T'Challa, na, I keep thinking Tuja Aicha. T'Challa मतलब मेरे को I always think तू चाइला. बंद करो. तू चाइला. I'm going to stop. Chalo, thank you everyone. See you on Discord. Have a good one. Hoezaay for out. Sir, you're not supposed to say anything. The Oh, exit okay. चल रहा है. क्या बंद कर रहा है. Last time. This is your BSDK. final warning. Thank you, Sally, for your family name. Bhag Stop. BSDK.